A very good evening to everyone. Today we'll do the analysis as far as Indian society is concerned. See, we need to understand that as far as mains is concerned, Indian society is comparatively an important topic. The simple reason is GS paper 1, GS paper 2, GS paper 4, as well as a considerable argument fodder is provided for you even in the essay paper. So it is extremely important. So this is how we are going to proceed today. One, what is the weightage of this section? Second, the nature of the questions, how to prepare those questions, and what to expect next. Because see, we are doing the analysis of the question which has already been asked. Maybe those questions, sometimes they are repeated also. If not the questions, then themes are repeated. But then we have to be prepared for altogether a new set of questions which UPSC is going to ask this year, right? So how we are supposed to proceed with it? Do we have some weightage? In general, if you look at it, 75 to 80 marks is what is being asked in GS paper 1 itself. Then approximately I've done a separate section on social justice. So 40 to 50 marks is from social justice. But there are some topics which are overlapping when it comes down to society and social justice. So if I talk about society only, it is 75 to 80 marks on a every year basis. I have done a small deconstruction, as in these are the broad topics of my syllabus, and in past 3 years, what is the amount of questions which has been asked. So if you look at the overall number, it is hovering around 75 to 80. So that variation is only because of the 15 marker and a 10 marker. You usually get 6 questions. So it's a said thing that 6 questions from society, 8 questions from geography. So that makes it 14. Then remaining 6 questions are distributed in history. So whether it is art and culture, whether it is post-independence, whether it is modern history, or it is world history. So all 4 aspects of history are falling in that ambit of remaining 6 questions. Otherwise, set pattern hai, society 6 questions and geography 8 questions. Is that very clear? See? Now, what can be the possible nature of question? Why am I saying this is, I have seen a lot of people claiming that if you go with society, you will realize it is the current affairs that is being asked. That's a mistake. We forget that current affair based question usually are being asked in social justice paper. That is GS paper 2. There you get question with respect to, let us say, national education policy. Or you are getting a question on Ayushman Bharat, or you are getting a question on analysis of some act. So largely current affair based questions are specific to GS paper 2. Having said that, we are not discounting that you would not get current affair based questions in society paper. What I'm trying to say is you cannot just rely on current affairs to prepare for society. Many people think कि हम सिर्फ social issues का जो current affair portion है वो करके चले जाते हैं by studying the recent issues, let us say surrogacy, let us say abortion, let us say marital rape issue, or for that matter education, health, hunger, malnourishment. ये पढ़ लेंगे तो हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. That is the thing which is an added thing which anyway you have to study. But you need to understand, and we will see also, most of the question are conceptual based. They are static in nature. They are basically static question को भी आप illustration based कर सकते हो by adding more examples from the current affairs. But largely the questions are asked on concept. For example, secularism. For example, communalism. For example, regionalism. हाँ, उसके examples you can pick up from something which is happening recent times. But the question mostly are conceptual based. It can be a blend of conceptual plus contemporary, but you cannot discount the importance of conceptual understanding. And that is my perception, that if your concepts are clear, then you can answer any question which is asked from society portion. Having said that, there are some questions which are factual, there are some questions which are analytical, and some which are illustration based. But if you ask me, as far as society is concerned, very rare we get factual question. Even if you get a question on fact,
The nature of the question would be analytical. Why some of the prosperous region has adverse sex ratio? So the question is based on a fact that there are some regions where there is adverse sex ratio, but the question nature is analytical, that why some prosperous region have adverse sex ratio. Same holds true for that, for example, there was a question that sex ratio among scheduled tribes is better than as compared to sex ratio among scheduled caste. Now the question is based on a data, but the nature of the question is analytical. Is that very clear? So very rarely you will get a question which is factual in nature. Most of the question in society would be conceptually oriented or dominated, and they would be analytical in nature. To analyze those questions, you should be prepared with examples. Sometimes they will directly ask in the question, discuss with examples, substantiate with examples, illustrate with examples. But even though they are not mentioning these terms, you always have to write the example, otherwise you will not fetch marks. Is that clear for everyone? See? Next. Any preparation of a subject which is subjective in nature. These are the basic 4 pillars. And in society, there exists too much of subjectivity. So first and foremost, you need to learn to deconstruct the syllabus, because the syllabus in itself is not very exhaustive. For example, in syllabus it is written salient feature of Indian society, but nowhere they have defined what they mean by salient feature. So that's your job to deconstruct the syllabus. That if you are preparing salient feature, then should I prepare joint family? Should I prepare caste system? Should I prepare diversity? Should I prepare pluralism, multiculturalism, cultural lag, or blend of tradition and modernity? Now it is your call that what according to you is the salient feature of Indian society. So every topic needs to be deconstructed. I'll do the deconstruction part as in when I'm taking the questions. Okay? Second thing is what I believe, that we need to focus on the vocabulary of the subject. I'll tell you why. I have said this in ethics paper also, and I'm reiterating myself. If you know the vocabulary of the subject, you will never go wrong. For example, this time they asked the question, salience of sect with respect to caste, religion and region. That was UPSC question. Salience matlab prominence. So what is the prominence or importance of sect, 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 with respect to caste, religion and region? लोगों को यही नहीं पता कि sect होता क्या है. अब प्रॉब्लम क्या है कि हम टर्मिनोलॉजी और वोकैबुलरी सब्जेक्ट की पढ़ना नहीं चाहते. हमको लगता है यार ये तो सोशियोलॉजी वाले पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़ेंगे? ये तो बेसिक नोशन है ना कि आपको पता होना चाहिए कि सेक्ट. आप डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो. इफ यू आर स्टडिंग डाइवर्सिटी, यू आर स्टडिंग रिलीजियस डाइवर्सिटी. One of the form of religious diversity is intra-religious diversity. That means within the religion there exists diversity. One of the example or manifestation of intra-religious diversity is sects and cults. तो कैसे आपको नहीं पढ़ा होना चाहिए sect and cult when diversity is the salient feature of Indian society? तो basically vocabulary of the subject is very important. एक question और पूछा UPSC ने कि is tolerance, pluralism, assimilation has gone into making of Indian secularism. अब इंडियन सेक्युलरिज्म पढ़ कर गए थे क्योंकि वो सिलेबस में था, लेकिन लोग कंफ्यूज, ये टॉलरेंस, असिमिलेशन, प्लूरलिज्म, इससे क्या मतलब है? अगर आपको इन वोकैबुलरीज का मतलब और एग्जाम्पल पता है, यू विल रियलाइज दैट एक्चुअली दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. And you just have to write the same answer which you know about secularism. It's just that कि structure 3 parts में divide होना था कि secularism का कौन सा feature tolerance बता रहा है, कौन सा feature assimilation है और कौन सा feature pluralism का example है. और वो तब possible होगा जब तीनों concepts का meaning आपको पता है. Otherwise क्या होता है, आते हुए question में इंसान घबरा जाता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. अब एक ने UPSC ने पूछा, has caste lost its relevance in understanding multicultural society? अब वो मल्टीकल्चरल वर्ड से हम घबरा गए कि व्हाट एग्जैक्टली दे मीन बाय मल्टीकल्चरल एंड व्हाई कास्ट हैज बीन मेंशन्ड हियर. सिंपल क्वेश्चन था, हैज कास्ट लॉस्ट द रेलेवेंस और नॉट?
आपको बस एक लाइन में समझाना था दैट इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, व्हाट डू वी मीन बाय दैट, एंड हाउ कास्ट हैज पेनिट्रेटेड irrespective of whichever culture we are talking about. And then you have to talk about has it lost the relevance or not. तो मेन कंटेंट सेम था, इट्स जस्ट दैट वो जो 1 or 2 कीवर्ड्स वो ऐड करते हैं, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स सो दैट यू कैन डिफाइन देम. एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. अब क्या हुआ, हमें लार्जली पता है कि कस्टम्स ट्रेडिशंस क्या हैं, बट जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि व्हाट आर कस्टम्स, what are tradition, what are the examples of customs and tradition, so that we can write the answer. So it is very important you know the vocabulary of the subject. Is this very clear for everyone? Okay. Once you know this, once you have prepared this, deconstruction of syllabus and vocabulary, go for your PYQs. PYQs helps you in streamlining your preparation. अभी हम PYQs देखेंगे, उसी से हमें बहुत बार आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक में what kind of questions needs to be prepared. You have 10 years of base. Imagine our condition when we started teaching in 2013. We actually didn't know what to teach. तो बस हम हवा में तीर चला रहे थे, कुछ लग रहे थे, कुछ छूट रहे थे. लेकिन आज हमारे पास 10 साल का बैंक है कि what kind of questions UPSC is asking from this area. And every year there are some questions which are repeated, as in not exactly the question but the theme, and it also gives you an idea that in future what kind of question you have to be prepared with. Is this very clear? For example, UPSC हर साल ट्राइबल्स पे सवाल पूछता है. अब आप ट्राइबल्स नहीं पढ़ के जा रहे हो तो किसकी गलती है? हर साल वो पूछ रहा है ट्राइबल्स पे. So you have to be prepared with these topics. Is that clear? And once you are done with it, practice your answer writing. Society answers are not difficult. Writing good answers is difficult. So you should know how diagrams, flowcharts, or introduction, conclusion, dimensions, how that can be introduced in your answer writing. So this is the challenge, nothing else is a challenge. So how can you practice your answer writing? Practice daily 2 answers, more than enough. And not only society, any subject that you pick up, practice 2 to 3 answers writing every day. Do not wait for you to finish the syllabus, revise it, and then write the answers. I've been saying this in my foundation course also, and I'll say it here also, that acme of skill does not lie in the fact that you knew the question, you wrote the answer, you fetch the marks. This can be done by anyone. The acme of the skill is when you didn't know the answer, you still wrote the answer, and you still fetch the marks. Because that is what UPSC is all about. You have to do on-the-spot answer writing because you can never predict what kind of questions would be asked. And 1 or 2 odd questions every year would be there. Actually, we don't know what is supposed to be written in that answer. But then you cannot afford to leave that question. कुछ तो लिखना ही पड़ेगा. तो अभी से प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ भी लिखने की, और इस तरह से लिखेंगे जिससे मार्क्स भी मिले. That's the art of answer writing. ठीक है? Broadly, this is the syllabus. This we know, this is broadly the syllabus. As and when I'm taking the topic, I will do the deconstruction for you. So in case you are not the foundation batch student, you will get an idea how that topic has to be prepared. The first topic largely is women. There is a topic in the syllabus, role of women and women organization. Okay. Every year there have been a question. I mentioned the question even from the previous year also. Analysis हमें 2020 to 2022 करना है, but just to give you an idea, there have been questions in the past. अगर women पे question यहाँ नहीं बनता है, तो essay में आ जाता है. और अगर essay में direct topic नहीं भी आए women का, तो application आ जाता है. I'll tell you the reason. 2020 में they have not mentioned the question on women, उसका reason था 2020 में एक essay का topic था women पे, patriarchy, least noticed yet the most significant structure of social inequality. पूरा 125 नंबर था women पे. तो women hands down is worth your investment. Please invest your time and energy in this topic. GS में इस तरह के question आए थे. Empowering women is the key to control population growth. Discuss. What are the continued challenges for women in India against time and space? Women's movement in India has not addressed the issues of women of lower social strata. Substantiate your view.
तो women पे question बहुत आसानी से बनते हैं, and I'll show you the flow chart how you are supposed to prepare this topic overall. If we are preparing women as a topic, the easiest way of doing it is you start with the concept of gender. You prepare what do we mean by gender stereotyping, because that's the major reason. We can talk about how gender is largely prevalent in a society which is characterized by notions of patriarchy. When we are studying patriarchy, we are going to talk about the concept, we are going to talk about the manifestation, and then briefly you can discuss the structures through which patriarchy is promoted in the society. Whether it is the family, it is the caste, it is religion, it is media, it is education system, etc. Once you have discussed this, please prepare patriarchy at workplace. And when you are discussing patriarchy at workplace, discuss it with respect to the sectors, discuss it with respect to the issues. अब आपकी चॉइस है कि आप issues और sectors में कितना ज़्यादा डिटेल में जाते हैं. You can prepare agriculture, women in agriculture. You can prepare women in service sector. You can prepare women in informal sector. You can also prepare women in industries. When we are discussing issues, you can discuss female labor force participation. You can discuss wage gap. You can discuss the recent problems, that is unpaid work. That is another major issue. You can also discuss sexual harassment at workplace. Choice is yours. Once we are done with all this, you can also discuss violence against women. और ये important topic है. So violence against women, please prepare in detail. Whether it is your statistics, causes, implication, government efforts, टाइप्स में आप चाहो तो करंट अफेयर्स से अब लिंक कर दो. जितनी करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिस्कस ट्रैफिकिंग, you can talk about issues of dowry, you can talk about the issue of domestic violence, you can discuss the problem of surrogacy, you can discuss the problem of marital rape. अब यहां पे जाके लिंक करो इसे करंट अफेयर्स से. अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो करंट अफेयर्स नहीं है, वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है which has to be prepared. And now you can add current affairs to it. For example, problem of trafficking है, problem of dowry है, domestic violence है, sexual harassment है, surrogacy है, marital rape है, link it. Is that very good? Medical termination of pregnancy issue among women. Add your current affairs here. So automatically the content becomes very comprehensive. What more you can add is the theme. Ultimately, we are studying all of this to ensure women empowerment. Prepare the theme of women empowerment. What do we mean by women empowerment? We'll discuss in 2 minutes. Along with this, I would suggest just add one more thing, that is sustainable development goal number 5. Sustainable development goal number 5 deals with gender equality. It is my observation, prepare your SDG goals very elaborately. It will never disappoint you. Whether it is essay writing, ethics answer writing, GS paper 2 answer writing, it will never disappoint you. Prepare your SDG goals well. Is this very clear? Is it making sense? Along with that, prepare
women movements. There are different stages in which women movements have emerged in context of India. So you just need to prepare a document, 150 to 200 words, that how women movements have emerged in context of India. Is that very clear? Whether they have been successful or not. If yes, then where, and if not, then why? Then what more needs to be done? Is this very clear for everyone? ठीक है? एक टॉपिक और आप यहां पे ऐड करोगे, वैसे आप पॉलिटी में पढ़ते हो बट सेपरेटली याद करेंगे, दैट इज women associations, organizations, bodies which are functioning for the empowerment and emancipation of women. जैसे सेवा, National Commission for Women. So you have to prepare all the organizations, associations which have been working for the emancipation and empowerment of women. Is this very clear? Once we are prepared with this, please prepare prepare some good quotations. Trust me, quotations not only help you in essay writing, it also helps you concluding your answers in GS paper. Because once you use a quote, it helps you save time and space. आपकी एक quote बात को एकदम clearly define कर देती है to the examiner. So quotations can come very handy in concluding your answers, especially society-based answers or ethics-based answers. Secondly, please prepare real-life anecdotes where women in different fields have achieved something. ऐसे में क्या होता है, एथिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए या ऐसे में ही आपको एग्जाम्पल कोट करना हो दैट हाउ और टू व्हाट एक्सटेंट विमेन एम्पावरमेंट हैज हैपेंड, सो यू शुड हैव सम 4-5 एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वेयर विमेन आर द एग्जाम्पल ऑफ लेट अस से इंटेग्रिटी. सो आपके पास ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट में एक विमेन सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल होना ही चाहिए. सिमिलरली एक मिथ एग्जिस्ट करता है दैट विमेन कैन नॉट मेक रैशनल डिसीजंस, so they should not be promoted to the higher rung. You give examples of women judges, give example of women lawyers where they have made significant difference to the society. Prepare the example of women corporate leaders where they have actually contributed to the overall economic growth of the nation. Give example from women sports person. So prepare at least 5 to 6 examples. You can take examples of women from your scriptures also. That how in our scriptures there have been examples where women has acted as an agent of social change. They have shown courage. They have been the examples of wisdom. So that all can be prepared. Always prepare. This is the most good investment you can make. Women तो तैयार कर ही रहे हो यार, कितना एक दिन नहीं लगेगा और ये सब कुछ तैयार हो जाएगा. अभी लग रहा है थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जब तैयार हो जाएगा, ट्रस्ट मी, वन टाइम एफर्ट, यू विल फील गुड अबाउट इट. ठीक है. Then obviously whichever statistics and reports you are referring, कुछ important reports होती हैं जैसे कि gender social norm index, इनसे ना हमें कंटेंट मिल जाता है. एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एक यू कैन प्रिपेयर NCRB विथ रिस्पेक्ट टू वायलेंस अगेंस्ट women. These are some of the basic statistics or data which can be prepared with respect to women. ठीक है. Similarly, कोई भी international example या domestic example with respect to women empowerment which can be replicated. देखो, आंसर ना कुछ नया लिखना पड़ेगा.
अगर बार बार हम सजेशन दें कि मॉरल ओवरहॉलिंग कर दीजिए सोसाइटी की, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे दीजिए, पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड, फंडिंग इज रिक्वायर्ड, इसमें आप ऐसी कौन सी बात लिख रहे हैं जो उनको नहीं पता और जो बाकी नहीं लिख रहे? सब यही आंसर लिख कर आ रहे हैं। आपको क्या ऐसा करना है दैट यू फेच 1 or 2 एक्स्ट्रा मार्क्स इन एवरी आंसर, और ये आपकी रिसर्च होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन टू गिव यू दिस। गूगल करो यार, तुरंत पता चलता है। इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? Is the women issue clear for everyone? This is how we are going to proceed with the topic. Once we are done with this topic, let's take up the question. This was the question which was asked. 2021 tha. Examine the role of gig economy in the process of empowerment of women in India. It's a simple question because all you are doing is you are preparing what is gig economy. In fact, post-COVID, we all are preparing what do we mean by gig economy. All you need to do is, वो anyway आप economy के लिए कर रहे थे. We just need to have one definition of gig economy. That according to World Economic Forum, the characteristic feature of a gig economy is to ensure workforce participation and income generation via gigs. That's it. एक definition आपके पास होनी चाहिए. Suppose करो आपके पास definition नहीं, तो फिर then we thought instead of starting the answer with a definition, let us start with a premise. That it was the time, ये आप खुद create कर सकते हो. Premise मतलब background, कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया होगा. तो मैंने सोचा शायद इसलिए पूछा गया होगा कि 20th सेंचुरी का जो टाइम था, women did challenge the notions of patriarchy. Women did take the initiatives. At least she came out of the domestic space and started participating in the labor market. There has been another turning point in 21st century where women is not only participating in the labor market, she is participating in those areas which are categorically reserved for men. And that has been possible because of gig economy. Is that very clear? आप कुछ और premise लिख लेते. मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको exact definition नहीं भी पता थी, there are other ways of writing. Let us suppose you are preparing your economy. When you are preparing your economy, हर टीचर आपको बताता है कि कुछ डेटा हमेशा तैयार होने चाहिए. तो गिग इकोनॉमी विसवी women, ये रिपोर्ट आई थी उस टाइम पर कि द जेंडर डायनेमिक्स इन इंडियाज गिग इकोनॉमी, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे दैट हाउ women are taking initiative on digital platform, how 1/5 of the freelancers are constituting women, how women freelancing earning is 84% of that of men. आप कोई भी एक इंट्रोडक्शन लिख सकते थे. ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इंट्रोडक्शन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमाइस, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. और कुछ नहीं समझ आता तो यू कुड हैव स्टार्टेड विथ द डेफिनेशन ऑफ विमेन एम्पावरमेंट. और ये तो आप पढ़ोगे क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट आप थीम कर रहे हो. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशंस की, that women empowerment is a multi-dimensional concept which talks about sense of self-worth, access to resources, or autonomy in decision making, control over life, and ability to influence the direction of social change. One of the means of women empowerment is female labor force participation, which has been aggravated because of emergence of gig economy. ऐसे ही स्टार्ट कर देते. तो सहूलियत आपकी है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है. Once you are done with this, 2 पार्ट का आंसर है. मैंने डिटेल में लिखा है, आप 2-3 पॉइंट्स भी लिखते तो आपको मार्क्स मिल जाते. There are 2 aspects, how it is leading to women empowerment and what are the challenges with respect to gig economy. Based on the challenges, what should be the conclusion. ये स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग होती है, that has to be done. Very quickly, let's go through the point. You can start from here. गिग इकोनॉमी है. सपोज करो आपने कुछ नहीं भी पढ़ा. ओके, डोंट लुक एट द स्क्रीन. गिग इकोनॉमी एवरीवन नोस, ठीक है. इट इज थ्रू गिग्स. आई एम जनरली आस्किंग दैट व्हाट वुड बी द बेनिफिट इफ वी आर वर्किंग इन गिग इकोनॉमी. क्या फायदा होगा विमेन को? फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स है, तो एटलीस्ट शी वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द लेबर मार्केट बिकॉज शी हैज बीन प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशन. दैट्स वन थिंग. व्हाट एल्स?
At least if low skill requirement, it also gives you an opportunity to upgrade your skill on a regular basis, because it is not a permanent job, it is a temporary job. So that honing of skill opportunity is also there. Another point, what else? Okay, reverse engineering karo. Why women is not participating in labor market? Dual burden. है ना? तो can I say that because of participation in gig economy, it is easy for her to manage the domestic chores? She can participate in the labor market without compromising the time she is supposed to give to the care work of the family members. Another reason why women is not participating is safety and security, accessibility to the workplace. That problem can also be solved. Are you getting my point? Reverse engineering कर लो. So even if you have not studied it before, अगर आपने वो फ्लो चार्ट पढ़ रखा है जिसमें हमने डिस्कस करा है ना, इश्यूज, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वेज गैप, अनपेड वर्क, अगर आपने उस इश्यूज को डिटेल में डिस्कस कर रखा है, यू हैव इनफ फॉर्डर टू बी रिटन इन दिस आंसर. इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? ठीक है. इनफैक्ट यहां पे ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर भी उतना देखने को नहीं मिलता है. दोनों साइड ऑफ द स्टोरी लिखेंगे कि एक तरफ विमेन इज वेंचरिंग इनटू द अरीना विच वर ट्रेडिशनली रिजर्व्ड फॉर मेन. फॉर एग्जांपल, अब विमेन आर आल्सो इंडल्जिंग इन टैक्सी ड्राइविंग. They are also indulging in graphic designing, the technical aspect of the work, which initially was very much reserved for the men. Why? Because of this online gigs. Is this very clear? And also they have the freedom to decide when to work, when not to work, at what pace to work. So ek added income is there. There is new concept which is emerging, mompreneur. A new mother who is indulging into entrepreneurship. And that has been possible because of gigs. Very quickly, just have a look. Flexible work condition will encourage women to seek career advancement. More employment opportunities. Part-time work, flexible hours, it would be easy to balance the traditional roles. Gig offers pay parity. Work from home nature will address the issue of safety and security. It will promote entrepreneurship. It will lead to development of self-identity. It will boost confidence, autonomy in decision making, extra income, less stress, etc. whatsoever it is. And overall, आप देखो, ये सारे points are catering to those 5 dimensions of women empowerment. But every coin has 2 sides. So there are some challenges. वो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है. ये जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर होता है, इससे आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, क्योंकि कोई डिफाइंड वर्क आवर्स नहीं होते हैं और इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. यू ऑलवेज हैव टू लुक फॉर न्यू गिग्स. And sometimes you may not want to work, but you have to work. Why? Because the opportunity has come to you. It may not come 1 week later. So instability is also one of the problem. Then gender stereotyping still exists. Even in the gig work, what we notice is that care services, beauty services, these are the areas where you will find more concentration of the women. तीसरा चीज है digital divide. That is another major issue. There are only 21% of the women who are the mobile internet users. Secondly, gig economy largely is a phenomena of urban space, where majorly your women are there in rural areas as well. Is it making sense? There are some companies which requires workers to have their own assets. If you have to work in the capacity of, let us say, delivery person or not, so you should have your own assets. Again, it's a patriarchal system. Women find it difficult. Is it making sense for everyone? ठीक है. Similarly, alienation of women workers from the benefits. Maternity Benefit Act है, sexual harassment के laws हैं, ये सब applicable नहीं हो पाते हैं, तो बहुत challenging हो जाता है women के लिए. और दूसरा है, there is always a constant pressure of ratings. In fact, I was going through the case study of women gig workers. तो वो जो beauty urban company वगैरह में होते हैं ना, different beauty, तो वो बताते हैं कि constantly there is a pressure that how much rating the customer gives. और कभी कभी ये होता है कि अगर आप किसी ब्यूटिशियन पर्पस से गए हो and the
concerned female ask you कि जरा 2 मिनट बच्चे को संभाल लीजिए तो, so and if you say no or something, because that's not your job, you are there to provide the beauty services, your job is not there to take care of the kid, but if you refuse doing that then immediately they'll give you less rating. अब क्या हो रहा है, कंपनी इन सारी चीजों का ध्यान रख रही है and they cross check that what is the reason behind that you've given the low rating, but otherwise there is a constant pressure. तभी आपने कभी देखा होगा वो हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज 5 रेटिंग दे दीजिए, 5 रेटिंग दे दीजिए, और हम लोग कितने कैजुअली अच्छा दे देंगे, होता है, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है. सो द पॉइंट हियर इज इफ देयर आर बेनिफिट्स देन देयर आर नेगेटिव्स टू इट ऑल्सो. एंड वंस वी आर डन विद इट, ओवरऑल कंक्लूजन that if you ensure or invest in women's labor market participation, it is not only beneficial for women but also the nation. You can just conclude by this data. McKinsey report says India's GDP will increase by $0.7 trillion if women's labor force participation increases by 10% by 2025. So it is investment not only in women empowerment but overall growth of the nation. Is this very clear for everyone? अगर ये नहीं लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो कि gig economy is creating the potential for women empowerment, but to address the negatives, a secured gig economy is the need of the hour. For example, Code of Social Security 2020 is the right move in the direction. Is it making sense for everyone? ठीक है. I have given you a very detailed answer. I don't expect you to write everything. It's a 10 marker. आप दो structure होना चाहिए. एक introduction, body के 2 parts जहां it is leading to women empowerment and where there are challenges and conclusion. अब उसमें आप points कितने लिखते हो, that is your discretion. Is it clear for everyone? Next. We'll take the theme of globalization. Okay? Again, it's a broad topic. The question, the topic in the syllabus is impact of globalization on Indian society. They can ask you any and everything. So we can divide it under 2 heads. One is the structure of the society and other is the culture of the society. How globalization impacts the structure, how it impacts the culture. Homogenization. We'll discuss this through question जो आया है. I'm just writing this flowchart for you. Structure को let's divide. Section, institutions. How it impacts family, how it impacts religion, how it impacts caste, marriage, मीडिया, एजुकेशन सिस्टम, आप कुछ भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स. यहां पे हाउ इट इम्पैक्ट्स विमेन, ओल्ड एज, यूथ, मिडिल क्लास. वी कैन ऐड टेक्नोलॉजी ऑल्सो हियर. That is totally your choice how you are preparing. This is basically for those people who don't have access to foundation courses. That since it's a broad topic, how globalization impacts the Indian society, this is the basic minimum which has to be done. अब इसके भी beyond पूछते हैं तो भी आप लिख लोगे अगर आपने इतना prepare कर रखा है तो. And largely the question is asked from this side. We'll discuss it via question. So impact on culture, homogenization, hybridization, revival of local culture. Impact on structure, you can prepare more sections. You can, if you want to add, you can add the vulnerable sections as well. You can go on and on. It totally depends upon you. जब भी globalization पढ़ो, what is the impact? जब भी आप ये institutions पढ़ो, 2 मिनट लगेंगे, देख लो what is the impact of the globalization.
You should have at least 4 points. 4 points में 10 नंबर का आंसर आराम से तैयार किया जा सकता है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन छोड़कर. ठीक है? Let's very quickly see the question. This is the last question that we are going to take up. 2020 से कर रहे हैं analysis. Is diversity and pluralism in India under threat due to globalization? Justify your answer. Read the above 2 questions also. Although they were asked in 18 and 19, which we are not discussing, but just read. Globalization is generally said to promote cultural homogenization, but due to this, cultural specificities appear to be strengthened in the Indian society. Read the second question. Are we losing our local identity for the global identity? Discuss. Do we realize all the 3 questions are same? They are talking about homogenization, hybridization, and revival of local culture. So if I have to take the question, is diversity and pluralism in India under threat due to globalization? Justify your answer. India is a diverse country. That is the characteristic feature, that is the salient feature of Indian society. वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया की diversity है, pluralism है, that is under threat because of globalization. We start with what is globalization? Any definition which is convenient for you. It's a process by which national, regional economy, society, culture get globally integrated. How? Through movement of people, ideas, technology, trade, etc. Now, the effect of globalization is far-reaching. On one hand, it is causing a threat to diversity and pluralism by promoting homogenization. On the other hand, diversity is still retained because of strengthening of local culture. How? Hybridization and revival of local culture. Once you have written this, you have the arguments. जितने example देना चाहो दे सकते हो. Diversity under threat. Why? Homogenization. English language. Now, English is becoming a language of communication also. In fact, medium of instruction in schools also. It is becoming the language of corporate sector also. So, जो linguistic diversity है, it is getting diluted. Similarly, McDonaldization of food habits, because of which जो respective cuisines हैं. Now, people are eating less of their traditional cuisines, but they are eating more of these foods. Then next is Western clothing. अब केवल हमारा जो ट्रेडिशनल क्लोथिंग है वो वीक में एक दिन एथनिक कल्चर का सेलिब्रेशन बन के रह गया है. इनफैक्ट अगर आप कभी भी क्लासरूम को देखो, यू कैन नेवर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द ड्रेसिंग स्टाइल, बेस्ड ऑन द ईटिंग स्टाइल, बेस्ड ऑन द म्यूजिक प्रेफरेंस दैट विच रीजन और कल्चर दे बिलोंग टू, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग similar. There is emergence of uniformity which is happening. So that is nothing but Western clothing. Another is opening of market for the global product. क्योंकि हमने globalization है, we have opened our market. Now what we are getting is the similar product. For example, Chinese toys in our market. So homogenization, uniformity आ रही है. Similarly, obsession with Western music and dance forms. Similarly, Walmartization, that is homogenization of retail sector. Walmartization समझ आता है ना? हाँ, Walmart culture. Is that clear? Reliance Fresh हो गया, ठीक है, Big Basket हो गया. This is nothing but Walmartization. Then Hollywood cinema is replacing the regional cinema. Similarly, जो एक मैरिज को लेकर या कोई भी रिचुअल्स वगैरह को लेकर जो एक डाइवर्सिटी होती थी कस्टम्स और ट्रेडिशन में, दैट इज ऑल्सो गेटिंग डाइल्यूटेड, right? Because secularization is happening. Significance of religion in the society is declining. And that's nothing but the impact of West. But that is one-sided reality. Another side is diversity and pluralism is still preserved. Hybridization का मतलब होता है local plus global. For example, McDonald's not selling beef products. For example, use of local language plus English, that is Hinglish. For example, remix music. So these are nothing but the example of hybridization. Is this very clear? ठीक है. But not only hybridization, there is also revival of local culture which is happening. Whether it is Ayush, whether it is religious revivalism, whether it is recognition of International Yoga Day, GI tag का concept, that is revival of local culture, national education policy, instructions in local language or mother
tongue, that's nothing but revival of local culture. Is that very clear? So we can say that globalization is like a double-edged sword. On one hand, it is creating challenges for diversity and pluralism. But on the other hand, as a reaction to globalization, diversity and pluralism are further getting strengthened. आप कोई भी conclusion लिख सकते हो, choice is yours. Is this very clear? But did you understand, वो ये important है, अच्छे examples तैयार करो. आपने देखा 2018 में सेम क्वेश्चन था, 19 में सेम क्वेश्चन था, 20 में सेम क्वेश्चन था. मैं एक बार फिर से वो स्लाइड दिखा देती हूं, आप देखिए. It said the same question, are we losing, अभी थोड़ा सा, I think it's hanged, are we losing our local identity for global identity? You are losing your local identity. Yes, homogenization is happening. No, we are not losing our local identity. Hybridization and revival of local culture. It is said to promote cultural homogenization. Abhi baat kari? No, it is not. Cultural specificities are getting strengthened. Hybridization and revival of local culture. 18, 19, 20. Is this very clear for everyone? Okay. Let's take another question. और भी क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि अभी वो डिस्कस नहीं करने, बट द क्वेश्चन वाज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ओल्ड एज, टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इम्पैक्टेड कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते. ग्लोबलाइजेशन से ऑलमोस्ट हर साल सवाल आता है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व. दिस वाज द क्वेश्चन. कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. तो इसका मतलब है कि डाइवर्सिटी इज गेटिंग डाइल्यूटेड, है ना. तो एक तरफ तो हो रही है डाइल्यूट, होमोजेनाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ बोलेंगे नो नो इट इज नॉट गेटिंग. वो घूम फिर के आंसर रिमेन्स द सेम. रीड दिस. Elucidate the relationship between globalization and new technology in the world of scarce resources with special reference to India. आप मुझे बस क्वेश्चन का मतलब बता दो, फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे. हाँ, एब्सोल्युटली. उस टेक्नोलॉजी को यूज करके हाउ कैन वी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस एंड हाउ वी आर गेटिंग एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी? ग्लोबलाइजेशन. सो इट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. वो जस्ट दैट वो एक स्टेटमेंट में बनाया गया है, तो थोड़ा सा एक बार को देख के लगता है ये क्या है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हाउ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ बाय मींस ऑफ दैट टेक्नोलॉजी वी कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस. और क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो दो चार वो एग्जांपल्स दे दो जहां इंडिया हैज एक्चुअली मेड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी आइदर बाय गिविंग टेक्नोलॉजी टू अदर्स और it has taken technology from other countries. Is that very clear for everyone? Very quickly let's have a look. Again वही एक standard definition globalization की कोई भी prepare कर लो. उसके बाद मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि यहाँ नहीं यूज करो तो कहीं और यूज कर सकते हो. For example, Zimmerman says कि resources are not, they become. It says that if you are scarce on resources but you have access to technology, you can create resources. For example, if you don't have enough coal, but you have technology, you can use that technology to harness a new renewable energy. So resources होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं. That is the perspective of Zimmerman. आप इसको यहां नहीं कहीं और यूज कर सकते हो, ठीक है. For example, Japan. They had access to no natural resource, yet it is one of the most developed countries in the world. So that is what is the perspective of Zimmerman. Now, यहां पे बस मैंने एक चीज करी थी जस्ट टू वाइडन द पर्सपेक्टिव, क्योंकि सोसाइटी में क्वेश्चन पूछा है, मैंने रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स से भी लिंक कर दिया.
उन्होंने सिर्फ रिसोर्सेज लिखे हैं, मैं उसको ह्यूमन रिसोर्स पे भी तो ले जा सकती हूँ ना। तो व्हाट आई डिड वाज कि बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड हाउ टू हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजी। वन ऑफ द रिसोर्स, although it is not scarce in context of India, that is human resource, but definitely our resource is not a capital. We definitely have human resource, but that human resource may not be the human capital, right? Second thing is, although we have the resource, but because of patriarchal setup, because of infrastructural social constraints, that resource is very restricted. This technology will help us to use the potential of this resource. So the first point is, with new technology, the section of human resource which was restricted, that is women, will now have opportunities, even their potential can be harnessed. And from where are we getting that technology? Globalization. Is that clear for everyone? Simple, ठीक? दूसरा point, अगर globalization है, अभी तो definition में ही लिखा है, नई टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन होगा, नई टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन होगा तो डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी के साथ साथ इनोवेशन का जो स्कोप है दैट विल ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। व्हाई? बिकॉज यू आर गेटिंग एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। अनदर सेज कि जो भी रेसिपिएंट कंट्रीज हैं जो टेक्नोलॉजी गेन कर रही हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली द कल्चर ऑफ R&D विल इंप्रूव। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, पेटेंट्स हो गए, ये अपने आप इंप्रूव कर जाएगा। वही नहीं, दूसरा, ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो क्वेश्चनिंग द रेलिवेंस ऑफ कॉन्स्टेंट सम थ्योरी। कांस्टेंट सम थ्योरी हमेशा ये कहती है कि सोसाइटी में पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो इफ समवन इज गेनिंग पावर, इट इज ऑलवेज एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। बट ये सच नहीं होता, बिकॉज देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट, वो ये कहता है कि पावर तो हमेशा बढ़ सकती है, जितना ग्रोथ होगा उतना पावर बढ़ेगी। तो ग्लोबलाइजेशन हैज करेक्टेड दिस प्रॉब्लम। सी, एवरीवन इज एक्सचेंजिंग देयर टेक्नोलॉजी, दे आर एक्सचेंजिंग देयर आइडियाज एंड हेल्पिंग एवरीवन टू ग्रो। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम ऑफ वैक्सीन स्केसिटी, एक टाइम था देयर वॉज प्रॉब्लम ऑफ वैक्सीन स्केसिटी, बट वी लॉन्च्ड व्हाट इज नोन एज वैक्सीन मैत्री, because we got access to technology, because of which R&D happened, we developed a vaccine and we did not keep that vaccine to ourselves. Because of globalization, we indulge in what is known as vaccine maitri. Similarly, auto driving cars, for example, Tesla. There would be less pollution, they will not utilize any fuel, electricity पे run करेंगे, ज़्यादा efficient होंगे, less usage of natural resources होगी और overall global economy पे positive impact होगा। कहाँ से आ रही है ये टेक्नोलॉजी? थ्रू ग्लोबलाइजेशन। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? नेक्स्ट, AI होगा तो एडवांसमेंट होगा मेडिकल रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में एडवांसमेंट होगा जिसकी वजह से नई मेडिसिन विल रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सिमिलरली कुछ और एग्जाम्पल्स लाइक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी है जो कोल बेड मीथेन और शेल गैस के लिए है बाय इंडिया, दैट इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। सिमिलरली इंडिया इज लर्निंग टेक्नोलॉजी ऑफ ड्राई फार्मिंग फ्रॉम इजराइल। गिव मोर एग्जाम्पल्स। Are you getting my point? It's a simple question. However, this is only one side of the story. The technology is not always beneficial. क्योंकि जब रिफाइंड टेक्नोलॉजी होती है तो उसके साथ हाई कॉस्ट एसोसिएटेड होता है। अगर हाई कॉस्ट एसोसिएटेड होता है तो बेनिफिट विल बी रीप्ड ओनली बाय दैट सेक्शन विच इज ऑलरेडी elite. So the divide between have and have not will further get widened. Is that clear? You can add more point कि जितना अगर देखा जाए हायर कंजम्पशन एंड एनर्जी कॉस्ट, जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी उतना पर यूनिट का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, जितना पर यूनिट प्राइस होगा उतना ज्यादा कंजम्पशन होगा और उतनी ज्यादा डिमांड होगी। आप खुद सोचो ना कि हम और कहीं क्यों जाते हैं। पहले आपका इंटरनेट का कॉस्ट कितना ज्यादा होता था, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रिफाइन होती चली गई जो पर यूनिट कॉस्ट है वो अपने आप कम होता गया। पीपल स्टार्टेड गेटिंग इंडल्ज मोर एंड मोर डिमांड इज गेटिंग क्रिएटेड। अगर ज्यादा कंजम्पशन होगा तो ज्यादा वेस्ट भी तो जनरेट होगा। Are you getting the point? There is a hidden cost associated to it and the hidden cost is it is promoting e-waste. जितनी टेक्नोलॉजी है उतना ई-वेस्ट जनरेट हो रहा है। ILO की रिपोर्ट कहती है कि 80% ऑफ दिस वेस्ट इज शिप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज।
where it is recycled by the informal sector workers. And when they are recycling those waste, it has adverse health and environmental implication. Is it making sense for everyone? See? So overall, then we can talk about the conclusion. I like this conclusion. You can सब पढ़ते ही आजकल. Design global होना चाहिए, manufacturing local होनी चाहिए. That's the new hybrid model which is emerging, where you can make the best possible utilization of the new opportunities which are generated. Is it making sense for everyone? Was the question simple? See, you need to understand कि ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हो तो टेक्नोलॉजी पढ़ोगे. ऐसा नहीं है कंटेंट तैयार नहीं होगा, कंटेंट तैयार होगा. ठीक है, बस इतना है कि हो सकता है जो आपने कंटेंट पढ़ा हो एग्जैक्टली वो कंटेंट न पूछा गया. इवन देन डोंट लीव एनी आंसर. 5 मिनट अपने आप को देना, आपको खुद कुछ ना कुछ तो इतना 10 नंबर का है यार, 150 वर्ड्स लिखने हैं. आप ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, आपने साइंस एंड टेक पढ़ा है, साइंस एंड टेक या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है. इंटरनेशनल रिलेशंस में यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज विच इज हैपनिंग बिटवीन द कंट्रीज, राइट? सो उसके एग्जांपल्स कोट कर सकते थे कि व्हाट टेक्नोलॉजी इंडिया इज टेकिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू विच रिसोर्स. आपने 3-4 वो एग्जांपल्स देने थे, आंसर खत्म हो जाता. आपको यूज करना है. और नेक्स्ट डे तो आप दे ही रहे हो ना एनवायरमेंट का, टेक्नोलॉजी का, आईआर का पेपर, और आईआर तो उसी दिन दे रहे हो शाम को. तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट, caste system. It is one of the part of the salient feature. We'll take the next question, this 2020. Has caste lost its relevance in understanding the multicultural Indian society? Elaborate your answer with illustration. It's a simple question. Just few minutes back I discussed this. ठीक है, हम answer देखते हैं. But before that, for those who are not having the idea, this is how we are going to prepare caste system. जो जो टॉपिक्स इस पीपीटी में है एटलीस्ट मैं वो आपको बता देती हूं कि वो कैसे फॉर्डर तैयार करना है. प्रिपेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, प्रिपेयर द मॉडल्स ऑफ कास्ट सिस्टम. विद इन मॉडल प्रिपेयर योर वर्ण मॉडल एंड जाति मॉडल. प्रिपेयर हाउ कास्ट सिस्टम हैज ट्रांसफॉर्म्ड, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम. The most important topic is role of caste in politics. And link it with all the contemporary issues. जो भी आपके कास्ट से रिलेटेड contemporary issues होंगे, चाहे it is demand for reservation, चाहे it is violence, चाहे it is Dalit capitalism, issue of dominant caste, or you can also prepare Dalit movements. Because anyway you have to prepare movements. One of the movement is Dalit movement. आप चाहो तो यहाँ पे कास्ट मोबिलिटी भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि जब आप कास्ट मोबिलिटी तैयार करोगे यू विल प्रिपेयर अ टॉपिक विच इज नोन एज संस्कृताइजेशन, विच इज नथिंग बट द कीवर्ड. I told you na, you have to prepare the vocabulary. So this is how the vocabulary has to be prepared. So what is the concept of caste system, models of caste system, transformation of caste system? Then we have caste mobility, role of caste in politics, Dalit movement and contemporary issues. Contemporary issues हमेशा add होते चले जाते हैं. Depending upon what has been in the news, it keeps on getting added. But this is the standard foundational content which has to be prepared. This would be the value addition. Is this very clear for everyone? Let's take the question. Has caste lost its relevance in understanding
The multicultural Indian society, elaborate your answer with illustration. We start with establish the multicultural tone of Indian society. That how in context of India, there exists harmonious coexistence of different religion or different culture. Do we agree to that? There exists harmonious, peaceful coexistence among people belonging to different cultures, whether it is with respect to language, religion, ethnicity, caste, etc. Is that clear? Then, amidst this cultural heterogeneity, one common thread which cuts across all the division is the pervasive caste hierarchy. Caste is not limited to one particular religion. Caste is not limited to one particular region. Caste is not limited to one particular language. So amidst this cultural heterogeneity or diversity, be it with respect to religion, class, or ethnicity, or any other community, language, region, one thing which is cutting across is all pervasive caste hierarchy. जब मैंने इंट्रोडक्शन में मेन कंटेंट एस्टैब्लिश कर दिया, मेन कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश कर दिया कि इंडिया की मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, even though it is multicultural, there is one common thread which is running across those multiple culture, and that is caste hierarchy. अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं, has caste lost the relevance or not? अब क्वेश्चन सिंपल हो जाता है. तो जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है, अगर मैंने शुरू में ही डिफाइन कर दिया, then I just have to answer the question which is asked. For example, in this particular topic, this is how we are answering. You start with a definition of caste system. It's a system of social stratification based on principles of purity and pollution. I made a diagram. This is my traditional caste system, which has three characteristic features: hierarchy, separation of contact, occupational division of labor. I can add more: endogamy and caste associations. These were the forces of change. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो कास्ट न्यूट्रल जॉब अपॉर्चुनिटीज आई. जब अर्बनाइजेशन आया तो सेक्युलर पैटर्न ऑफ लिविंग आया. जब मॉडर्न वैल्यू सिस्टम आया, सो नाउ हायरार्की इज मोर सेक्युलर इन नेचर रादर देन रिचुअल. सो रादर देन बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पोल्यूशन, इट इज बेस्ड ऑन एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट. ठीक है. इंटरकास्ट मैरिज इज ऑल्सो ऑन द राइज. कास्ट एंडोगेमी इज गेटिंग चैलेंज्ड. ठीक है. देन राइजिंग इंसिडेंसेस ऑफ मोबिलिटी है. नाउ पावर इज डिस्पर्स्ड. पहले पावर क्यूमुलेटिव थी. जो अपर कास्ट था वही अपर क्लास था. लेकिन अब जरूरी नहीं है कि अपर कास्ट इज ओनली अपर क्लास, because even people belonging to low caste are getting access to mobility. Why? Because there are certain actions taken by the state. For example, affirmative action. Because of affirmative action, people belonging to low caste got access to education, jobs and political power. Their overall status is improving. ये तो one side of reality हो गया. However, it still continues to remain the hegemonic force. That means caste is very much persistent. According to National Family Health Survey report, only 11% marriages are intercaste. That means 89% of them are still caste endogamy. दूसरा है caste based matrimonial websites. यानी caste endogamy are still being practiced. कास्ट बेस्ड एजुकेशनल एसोसिएशंस, हमने बोला था ना कास्ट एसोसिएशन पहले भी एग्जिस्ट करती थी, आज भी करती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एसोसिएशंस हो, पॉलिटिकल एसोसिएशंस हो, एजुकेशनल एसोसिएशंस हो. एग्जांपल्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक एसोसिएशंस, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. यू हैव politicization of caste and casteization of politics. These are nothing but political associations based on कास्ट. चाहे बीएसपी हो, चाहे हरिजन सेवक संघ हो, चाहे भीमसेना हो, these are caste based political associations. Similarly, educational associations. That means caste is still very much relevant, right? Similarly, manual scavenging आज भी persist करता है. That means occupational division of labor is still being practiced. Is this very clear for everyone? Similarly, social indicators. अब इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको हर पॉइंट दे रही हूं कि 4 तो याद रहेंगे आपको एग्जाम में. Demand of OBC status by the dominant caste. People are demanding reservation under OBC status. Then class within caste concept. That reservation benefits are given to a certain section. But not everyone in that section is able to reap the benefits. Only few are able to. That means class within caste. Write all those points. And finally, you can conclude.
ऐसा नहीं है कि कास्ट की सिग्निफिकेंस कम नहीं हुई, थोड़ा बहुत रेलेवेंस कम हुआ है, पर ये कह देना कि कास्ट हैज बीन रिप्लेस्ड or caste has been annihilated, that is oversimplified assumption. Caste is very much ingrained in our system even today. Whether it is matter of education, whether it is matter of marriage, whether it is matter of political aspect, as in you still don't cast your vote, you vote your caste. So it is still there. Is that very clear for everyone? Is the answer writing part clear? आपको हर आंसर में कोई एक नया फ्लो चार्ट या डायग्राम दिख रहा है? You have to make utilization of those ideas. ठीक है. Next. इस पे आता ही आता है कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म. ये स्टैंडर्ड टॉपिक है एंड एवरी ईयर दे आस्क यू द क्वेश्चन. ठीक है. Very quickly, let's just have a look how we will prepare the topic. The first topic is communalism. You will prepare it as concept of communalism, its manifestation. This you get in history. जहां हम पढ़ते हैं ना, mild, moderate, extreme. ये modern history में पढ़ते हैं. Then we have types of communalism. Once we discuss this, then we have to talk about evolution of communalism in India. दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, प्री इंडिपेंडेंस and how it has persisted in post-independence. Once we are done with this, we'll talk about religious fundamentalism. Here we are talking about the concept and cause. And overall, then we will discuss what is required is, क्योंकि एक social issue है, for social issue you always prepare the way forward. This is how communalism would be prepared. Is that clear? Once we are done with communalism, there is a topic, regionalism. Concept of regionalism, types of regionalism, basis of regionalism, impact of regionalism. As simple as that. What is regionalism? What are different types of regionalism? Intrastate, interstate, suprastate. Then basis of regionalism. Whether the basis of regionalism is historical, whether it is socio-cultural, whether it is geographical, whether it is economical, whether it is politico-administrative, there can be different bases of regionalism. Simple topic है, इसी में से फंस जाता है. And finally, impact of regionalism. Why we discuss impact of regionalism? Because we have to discuss whether regionalism is a threat to, how should I put it, to unity or integrity in India. Whether it is a threat to the integration. Let me put it this way. Whether is it a threat to national integration in India.
इसलिए हम इम्पैक्ट पढ़ते हैं कि क्या रीजनलिज्म इज अ थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन और नॉट. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक. और जब भी आप रीजनलिज्म पढ़ते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, हमेशा एग्जाम्पल्स को फेजेस में डिवाइड कर लेना. एक 50s 60s का पीरियड था, एक 70s 80s का पीरियड था, एक हुआ था ना 50s 60s रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया, एक 70s 80s का पीरियड था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एक पोस्ट 2000 का पीरियड था वेयर रीऑर्गेनाइजेशन हैपेंड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरियाज. ठीक है ना, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, उत्तराखंड था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, तेलंगाना ऑफ लेट. तो हमेशा प्रिपेयर द एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनलिज्म इन फेजेस. Regionalism cannot be prepared without examples. So examples is must to justify your arguments. Let's very quickly go back to the question. कौन सा डिस्कस करना है? लास्ट वाला. लास्ट वाला क्वेश्चन है, Do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? Argue. Remember we discussed the topic basis of regionalism. Basis का मतलब है what is the cause behind emergence of regionalism, whether it is historical, whether it is socio-cultural, it is economic, it is regional or it is politico-administrative. There can be different factors. आप देख रहे हो क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. एक तरफ बताना है हाउ इट इज द कल्चरल असर्टिवनेस विच हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ रीजनलिज्म, और दूसरी तरफ बताएंगे इट इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक, चलो वेरी क्विकली लेट्स हैव अ क्वेश्चन. क्वेश्चन आ गया. हाँ, स्टार्ट विथ एनी डेफिनेशन ऑफ रीजनलिज्म. When we start professing our political loyalties more towards a region rather than the state or nation, it is nothing but regionalism. Or we can say regionalism is rooted in India's diversity with respect to religion, language, ethnicity. When all these factors gets geographically concentrated along with feeling of relative deprivation, it is known as regionalism. You will learn the definition whenever you are preparing the topic. Then we will talk about that how one of the reason for emergence of regionalism is our desire to concretize our identities. जब हम पढ़ते हैं ना कि causes क्या हैं, तो आप खुद सोचो, अब तक आपने, मैंने कहा ना phases में तैयार करो, तो पहला जो phase था वो linguistic reorganization था. तो वहां पे we were trying to concretize our cultural identity based on language. There was a time when people were demanding Dravida Nadu. That was basically based on the historical aspect. There is also incidences of son of soil policy when we are trying to assert our culture by saying that we are the natives of the land. Similarly, if you have noticed, there have been tribal ethnicity movements against the outsiders. Why? Because they want to preserve, protect, conserve their own unique culture. So can I say regionalism is an example of cultural assertiveness? मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए. रीजनलिज्म का आंसर बिना एग्जाम्पल के नहीं लिखा जा सकता, और वैसे भी इसमें दे भी रखा है कि आर्ग्यू करना है. ठीक है. नाउ सी, कल्चरल असर्टिवनेस लीडिंग टू रीजनलिज्म. वी हैव हिस्टोरिकल फैक्टर, वी हैव लैंग्वेज, वी ऑल्सो हैड रिलीजन. Religion can accentuate regionalism when it is combined by linguistic homogeneity. Is that very clear? Similarly, ethnic movements in tribal areas against the outsiders, or it can be son of soil policy, love for the land. However, there are other factors also responsible. In fact, it is being said that economic factors constitutes the crux of regionalism. So no two region can be equally developed. So whenever there is a mismatch in the level of development, there is lack of availability of resources, the planning, instead of bridging the gap between haves and have-nots, is widening the gap. It may result into feeling of relative deprivation and demand for regionalism. आप examples देख लो. बहुत बार नॉर्थ ईस्ट में violent outbursts are the result of underdevelopment of नॉर्थ ईस्ट.
Many a time, the demand for Telangana, Jharkhand, Chhattisgarh, they were all because of the feeling of relative deprivation. Similarly, political factors. कहा जाता है politics does not create regionalism, but politics accentuates regionalism. Regionalism को बढ़ाती हैं. कैसे? By fanning the sentiments of discontent among the people. Discontent exist कर रहा है, उसको थोड़ा सा हवा देते हैं, तो उसकी वजह से regionalism और बढ़ जाता है. We have examples. Then we have examples that we have failed to create job opportunities or there is problem of administration. And finally you can conclude. तो ऐसा तो है नहीं कि जो हमने फ्लो चार्ट दिया उसके बाहर से आया. आप पुराने भी रीजनलिज्म के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वो उसी फ्लो चार्ट में से सॉल्व हो जाएंगे. एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म? क्वेश्चन मार्क. इज इट द इकोनॉमिक फैक्टर विच कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ रीजनलिज्म? ये उसी में से सॉल्व हो जाता. ठीक है. एक क्वेश्चन आया था, ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज द रीजन बिहाइंड डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट. अगर आपके पास डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट के एग्जांपल्स हैं, जो कि हम करेंगे टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म में, आपको खुद ही समझ आ जाएगा इट इज द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म विच इज लीडिंग टू द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट. इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है. चलो ये क्वेश्चन देखो. Are tolerance, assimilation and pluralism the key elements in making an Indian form of secularism? Tolerance का मतलब पता है? Tolerance का मतलब होता है किसी के साथ पीसफुली को एग्जिस्ट करना या किसी को झेलना, डिस्पाइट दैट वो जो कह रहा है आपको अच्छा नहीं लग रहा. वो जो कह रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको टॉलरेंस नहीं कहते. When the person is holding an opinion which is contrary to your belief, even then you are coexisting with that person, that is known as tolerance. Is that clear? Assimilation का मतलब होता है there is a large dominant group which is existing, which has absorbed all the minority groups within its fold. That is known as assimilation. Is that clear? थर्ड इज प्लूरलिज्म. बहुत बार क्या होता है, प्लूरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म इज सिनोनिमसली यूज्ड. लेकिन अगर मुझे थोड़ा डेप्थ में जाना है, सो देयर इज वन डिफरेंस. मल्टीकल्चरल सोसाइटीज में डोमिनेंट कल्चर नहीं होता, प्लूरलिज्म वाली सोसाइटीज में डोमिनेंट कल्चर होता है. That's the only difference. Otherwise कहा जाता है कि you can use both the terms synonymously also. लेकिन सपोज करो एक ही जगह दोनों टर्म दे रखे हैं, मल्टीकल्चरल एंड प्लूरलिज्म, तब अलग अलग यूज करना. मल्टीकल्चरल सोसाइटीज में डोमिनेंट कल्चर नहीं होता. इट सेज पीसफुल को एग्जिस्टेंस अमंग डिफरेंट कल्चर्स, दैट इज मल्टीकल्चरल. प्लूरलिज्म में भी हम कहते हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, बट देयर इज ऑलवेज अ प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट कल्चर. तो माइनॉरिटी ग्रुप्स अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखते हैं. दे आर प्रैक्टिसिंग देयर ओन कल्चर, ओन रिचुअल्स, ओन प्रैक्टिसेस. डोमिनेंट कल्चर इनफैक्ट कुछ उनकी प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट भी कर लेता है इफ इट इज इन सिंक विद देयर ओन बिलीव्स. तो देयर इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस, बट इन प्लूरलिस्ट सोसाइटी देयर इज ऑलवेज अ डोमिनेंट कल्चर. इज दैट वेरी क्लियर? तीनों वर्ड्स का मीनिंग पता है. इंडियन सेक्युलरिज्म पता है कैसे प्रैक्टिस होता है. अब बताओ क्या आंसर हो सकता है? इंडियन सेक्युलरिज्म के कुछ फीचर्स ही बता दो, आंसर अपने आप मिल जाएगा. बिल्कुल प्रिंसिपल डिस्टेंस फॉलो करते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव है स्फीयर ऑफ स्टेट एंड religion. There exists what is known as principal distance. That means the state should have the freedom to decide whether to interfere or not to interfere, depending upon what is required to ensure equality, justice, liberty in the society. तो principled distance है. I'll take that point. What else? That means complete exclusion नहीं है. ठीक है ना? Exactly, no complete separation of state and religion. गांधी जी का पर्सपेक्टिव क्या कहता था सेक्युलरिज्म को? सर्वधर्म संभव. एग्जैक्टली, इक्वल, बिल्कुल
equal respect for all the religion and faith, where you are made to believe that in every religion, the path to ultimate moksha, salvation is the same. Is this very clear? So actually we are talking about tolerance here. If you look at your constitutional provisions, Article 25 to 28, aren't we talking about pluralism there? Aren't we talking about tolerance there? Are you getting my point? Now just look at it. Indian form of secularism is always to be said कि it is borrowed from the West. But the reality is the idea may have been borrowed, the term secularism, but it is always rooted in unique historic circumstances. And it is evident from the examples of our ancient past, we have always practiced what is known as tolerance. And that has been reflected even in our Indian form of secularism. Second is, unlike West, there exists principal distance, equal respect and protection to all religion, state neutrality or indifference for each religion. अब देखो, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। अब हम एग्जाम्पल्स दे देते हैं। 3 पार्ट्स में आंसर को डिवाइड कर दो। अगर 3 एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, नहीं है तो एक साथ लिख देना, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने इतनी हिस्ट्री पढ़ी है, आपके पास ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे। तो हमने टॉलरेंस का एग्जाम्पल उठाना है, एंशिएंट पास्ट से उठा लें, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो। वी वर ऑलवेज बीइंग टॉलरेंट। एक लाइन में टॉलरेंस डिफाइन कर दो, विलिंगनेस टू टॉलरेट एग्जिस्टेंस ऑफ ओपिनियन वन डिसअग्रीज विथ। India has always been a land of tolerance. So in history, when it was the example of Samudragupta who granted permission to Meghvarman to establish a monastery, okay? He was a devout Hindu. Similarly, Harshvardhan, he was a devout follower of Shiva, but influenced by Hunsang, he accepted Mahayana Buddhism, but he did not come out of Hinduism. That is nothing but tolerance. Okay? Similarly, Krishna Dev Raya, he was a devout follower of Hinduism. Despite that, he had recruited people of other faith in his administration. Then we talk about modern India. During freedom struggle, we have examples like Govind Ranade, Gopal Krishna Gokhale, they all, or Gandhi ji, they all adopted a secular approach to politics, which was based on the idea of tolerance. Even post-independence, there is no official state religion. Article 25 to 20 guarantees every person the freedom of consent, then right to profess, propagate or imbibing the spirit of tolerance. So these are nothing but the examples. सब नहीं लिखना था, जो 2-3 आपको लिखने हो वो आप लिख देते। फिर आता है assimilation। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं अग्री करती हूँ, मैं एज इन जो एक स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता है वो ये कहता है इंडिया इज मोर ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है सारे माइनॉरिटी कल्चर बड़े ब्रॉड कल्चर में अब्जॉर्ब हो गए। लेकिन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो इंडिविजुअल माइनॉरिटी कल्चर अभी भी अपने कल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन असिमिलेशन ही बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम असिमिलेशन को जस्टिफाई कर कर एक लाइन में लिख देंगे, व्हाट मेजरली इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज द इंटीग्रेशन रादर देन assimilation. पर assimilation भी है। For example, leaders like Dr. B.R. Ambedkar had emphasized on assimilation of minorities and downtrodden into the mainstream. There have been examples where Sufi culture has been influenced from Bhakti saints. They have adopted the breathing techniques or the yogic postures. तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ assimilation नहीं हुआ, but largely अगर constitution को देखें, so it is an example of integration. Is it making sense? ठीक? फिर हम बात करेंगे प्लूरलिज्म की, इस पे बहुत है लिखने के लिए। तो आप इसमें प्लूरलिज्म मतलब होता है कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर। एक लाइन में प्लूरलिज्म की डेफिनेशन दो और उसके बाद आप एग्जांपल्स देते जाओ। आप खुद सोचो, हम डिफरेंट रिलीजियस हॉलीडेज ऑब्जर्व करते हैं, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ प्लूरलिज्म। इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? फेयर्स एंड फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैज बोरोड फ्रॉम डिफरेंट religion. Similarly, linguistic and cultural rights को हमेशा ensure करते हैं. So we are respecting the individual culture of the minority groups, and this is nothing but forming the 3 pillar of Indian model of secularism. Difference does not mean conflict. It means accommodating those differences. So hands down, tolerance, assimilation, pluralism are the 3 pillars of Indian secularism. Is this very clear for everyone? ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है यार, यूपीएससी ने कोई टर्म पूछ लिया
जैसे असिमिलेशन, हो सकता है आप उससे अग्री नहीं कर रहे, जैसे मैं नहीं कर रही थी, मुझे लगता है इंडिया इज एन एग्जाम्पल मोर ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन क्योंकि यूपीएससी ने असिमिलेशन लिखा है तो हम उसको काउंटर नहीं करेंगे, हम एग्जाम्पल देंगे वहां पे जहां पे असिमिलेशन प्रैक्टिस हो रहा है। इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट मेकिंग सेंस? ठीक, क्वेश्चन समझ आया कि जो चीज डिफिकल्ट लग रही होती है जरूरी नहीं है कि वो डिफिकल्ट हो। अच्छा, पावर्टी का फ्लो चार्ट मैं सोशल जस्टिस में ऑलरेडी दे चुकी हूं, क्योंकि पावर्टी दोनों जगह फॉल करता है, सोशल जस्टिस में भी और सोसाइटी में भी। दिस इज द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक। कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पावर्टी इन इंडिया, यू हैव टू कमेंट। ये पता है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। कैसे था? 2020 में जो विजन की करंट अफेयर बुकलेट थी उसमें दिस टॉपिक वाज गिवन अंडर इकोनॉमिक्स, कोविड-19 विसवी पावर्टी, ये हेडिंग थी और उसके नीचे टॉपिक था। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज इकोनॉमी में पढ़ी है तो वो सोसाइटी में पूछी नहीं जा सकती। वैसे भी आप एनीवे पढ़ते, आप पावर्टी सोसाइटी में पढ़ते हो, और कोविड-19 से रिलेटेड हम सब पढ़ रहे थे, कोविड-19 विसवी विमेन, कोविड-19 विसवी चाइल्ड, कोविड-19 विसवी एजुकेशन, कोविड-19 विसवी पावर्टी, ये हम पढ़ ही रहे थे क्योंकि कोविड-19 पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। COVID-19 pandemic accelerated class inequalities and poverty in India. You need to comment. देखो, अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो तो डेटा तैयार कर रहे होगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट कर सकते हैं डेटा से, that how COVID-19 has expected to push 100 million more people into extreme poverty and threaten the livelihood of at least 1.6 billion people globally. That means COVID-19 has had a significant impact. फिर आप एक लिंकिंग स्टेटमेंट डाल सकते हो that although it has impacted every section of the society, but the major brunt has been borne by the marginalized section. Why? Because it has aggravated poverty and class inequality. हमने लिंक कर दिया क्वेश्चन से। अब दो पार्ट में आंसर को डिवाइड कर दो, how it has led to acceleration of poverty, how it has led to acceleration of class inequality. दोनों के लिए आपको थोड़ा बहुत डेटा चाहिए, वो आपको इकोनॉमिक्स से मिल जाएगा। How it has led to acceleration of poverty? According to UN University report, number of poor people in India has increased to 915 million due to COVID. Similarly, according to ILO, 400 million workers in the informal sector will be pushed deeper in poverty. क्यों? लॉकडाउन था, क्वांटिटी ऑफ वर्क डिक्लाइन कर रहा था, ले ऑफ को अवॉइड करने के लिए वेजेस कट किए जा रहे थे, सो द चांसेस ऑफ फॉलिंग इन द ट्रैप ऑफ डीपर पॉवर्टी हैड गॉट एग्रेवेटेड। ओवरऑल सोर्स ऑफ इनकम रिड्यूस हो रही थी। जो लोग स्पेशली गिग इकोनॉमी वगैरह में थे उनके तो एक्चुअली डिसरप्शन ऑफ वर्क हो गया था, प्लस कोई इनकम सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड नहीं की गई थी क्योंकि वो इनफॉर्मल वर्क स्पेस होता है। देन राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। जब मार्च में कोविड पहली बार आया था तब 8.4% अनएम्प्लॉयमेंट था, और जब तक कोविड लॉकडाउन के बाद खत्म हुआ तो 23.8%। तो लॉकडाउन से पहले कितना अनएम्प्लॉयमेंट था और लॉकडाउन के बाद कितना अनएम्प्लॉयमेंट था। इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है। इनफैक्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ रहा था, एक तो हेल्थ में वो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, दूसरा एक्सपेंडिचर इस बात से बढ़ रहा था क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए थे। स्कूल्स बंद होने की वजह से मिड डे मील बंद हो गया था। इनफैक्ट दांडेकर एंड रथ कमिटी सेज अ पुअर पर्सन स्पेंड्स 2/3 ऑफ देयर इनकम ऑन फूड, और एक बच्चे का एक टाइम का भी खाना जो पहले फ्री मिल रहा था वो जब नहीं मिलता है, सो इट इज अ बर्डन ऑन योर पॉकेट। सो हेल्थ एक्सपेंडिचर भी था, फूड एक्सपेंडिचर भी था, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस भी बढ़ गए थे, इसलिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वाज ऑन द राइज। नॉट ओनली दैट, क्लास इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही थी। मैंने सिर्फ एक लाइन में क्लास इनइक्वालिटी डिफाइन कर दिया है, मुझे हमेशा लगता है कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। तो वो ये कहता है यूनाइटेड नेशंस कि स्टेट ऑफ बीइंग अनइक्वल मतलब यू डोंट हैव इक्वल एक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। अगर आपका स्टेटस बराबर नहीं है, आपके पास बराबर के राइट्स नहीं है, आपके पास बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसका मतलब है इट इज इनइक्वालिटी। अब क्लास इनइक्वालिटीज बढ़ रही थी। इज दैट वेरी क्लियर? कहां से इसको लिंक कर सकते हो? इनफॉर्मल सेक्टर से, विमेन से, यू कैन लिंक दैट। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई थी, अजीम प्रेमजी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट, which said that during COVID 7% men lost the job but 47% women lost the job. तो आप देख रहे हो क्लास inequality will get aggravated. Is that clear? Now let's have a look at it. Access to basic necessities. Poor neighborhoods were densely packed.
chances of spread of virus was very high. They did not have basic facility. Hygiene was becoming a luxury. Is that very clear? Class inequality और ज़्यादा widen हो रही थी. Then issues with respect to the informal sector. You can mention that. Next is issue with respect to women. Just have a quick look. With respect to education, prioritizing of teaching of a male child. जब resource कम होंगे तो लड़के को पढ़ाएंगे rather than the girl. Similarly, with respect to health expenditure, most of the women were working as a frontline worker. Asha workers. Are you getting the point? So at that point of time, they were putting their life under threat, but they were not being given any additional incentives. So the inequalities were also getting widened. ठीक है? Then with respect to jobs, बहुत सारी women हैं जो SHGs पे depend कर रही थी. Disruption of SHGs. So again, the class inequality was getting widened. Is that clear? Then similarly, small and medium enterprises, they were also getting shut. क्यों? लॉकडाउन वगैरह था, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे थे, उनके लिए डिसरप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट्स हो रहा था. सो बिकॉज ऑफ विच द ओवरऑल वर्किंग ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वर गेटिंग नेगेटिवली इंपैक्टेड. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है. देन ओवरऑल डिसरप्शन ऑफ एजुकेशन. इनफैक्ट लर्निंग पॉवर्टी लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई बिकॉज ऑफ दिस कोविड पीरियड. इतना जितना भी एक होता है ना लर्निंग आउटकम आना, तो वो यही बोल रहे थे बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ द स्कूल, बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग एक्सेस टू ऑनलाइन education, not having the gadget to seek online education, the learning levels have negatively been impacted. So that is also one of the reason. आज अगर education खराब हो रही है, you will see the result 10 years later. Is it making sense for everyone? Overall conclusion can be given. Trust me, all of these questions are simple questions. But you have to be prepared for it. मैंने कहा था ना कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो करंट बेस्ड आते हैं, एंड मोस्टली दिस इज अ सोशल जस्टिस पेपर क्वेश्चन, क्योंकि पॉवर्टी उसमें आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एंड दिस क्वेश्चन वॉज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स. वाई? बिकॉज कोविड से रिलेटेड हम हर डायमेंशन तैयार कर रहे थे सोचकर कि यूपीएससी कैन आस्क एनी डायमेंशन. लेट्स वेरी क्विकली टेक अनदर टॉपिक. Salient feature of Indian society. We'll take the last topic. पहला और आखिरी क्वेश्चन नहीं. Let's not take just read the last question. Customs and traditions suppress reason leading to obscurantism. Do you agree? Question का क्या मतलब है? हाँ, ऑब्सक्यूरेंटिज्म का मतलब होता है चीजों को छुपाना, सब कुछ नहीं बताना. हाइडिंग, डेलिबरेटली हाइडिंग सम इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑब्सक्यूरेंटिज्म. तो वो ये कह रहे हैं कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजनिंग, रैशनैलिटी, विच ओवरऑल लीड्स टू obscurantism, that is which overall not let you see the ultimate reality. ठीक है, पर क्वेश्चन क्या है? Do you agree? To be very honest, not every custom or practice suppresses reason. There are certain customs and practices which are actually based on rationality. Customs क्या होते हैं? एक सबके घर में कुछ ना कुछ customs और practices होंगी. क्या मैं ये कह सकती हूं कि customs are those practices which are widely accepted way of behaving? But customs are always specific to time, space, community. Every community has a different custom. In different times, you might have different customs. In different space, there might be different customs. So customs are defined as widely accepted way of behaving, but it is particular to a time, space, or community. And when these customs are transmitted over generation, they are known as tradition. That is only for your understanding. कुछ customs और tradition बहुत अच्छे होते हैं. आप लोगों ने मकर संक्रांति मनाई है? In or on Makar Sankranti, there is a culture, a custom of donation. It is a very progressive custom. It is based on a rationality which says that if you want to maintain the ethical moral fabric of the society, you have to indulge in charity. You have to be compassionate. So that culture of donation, that custom of donation under Makar Sankranti is a very progressive custom and tradition.
Similarly, custom of langar. Again, it is a very progressive custom. Similarly, customs of celebrating festivals with the family members. Do you realize that in today's time, everyone is busy with individualistic lifestyle? It is this custom of getting united or together during festivals. It actually strengthens the collective conscience of the society. So again, it is a very progressive custom. You have a custom in Buddhism where you do the chanting. होता है ना वो बुद्धिस्ट मंत्रास की चैंटिंग होती है. दैट अगेन इज अ वेरी प्रोग्रेसिव कस्टम बिकॉज इट इज टू असर्ट द मॉरल फैब्रिक और द वर्च्यूज इन द सोसाइटी. So there are customs which are progressive. On the other hand, there are some customs which may not have been very progressive. और उसका रीजन है, ये जो कस्टम्स और ट्रेडिशन होते हैं ये कल्चर ऑफ कंजर्वेटिविज्म प्रमोट करते हैं. कंजर्वेटिविज्म का मतलब होता है यू अज्यूम दोस कस्टम्स टू बी राइट विदाउट क्वेश्चनिंग देम. तो क्या होता है, इट इज सप्रेसिंग योर रीजनिंग. जहां क्या होता है आप एक्चुअली रियलिटी नहीं देख पाते. आप क्या होता है कि कस्टम्स और ट्रेडिशन को वी अज्यूम देम टू बी राइट. फॉर एग्जाम्पल फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन इन दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, इट इज अ कस्टम. Nobody is questioning whether it is right or wrong. Since it is a custom, everybody believes this is how things have to be done. Corporal punishment to the children. क्योंकि ट्रेडिशन चला आ रहा है कि बच्चे मारपीट कर बड़े किए जाते हैं. Nobody questions that. Right? Even in schools also. बहुत सारे schools हैं जो एक्शन लेते हैं, बट बहुत ऐसे schools हैं जहां कोई एक्शन नहीं. There have been infamous incidences जहां टीचर ने इतना brutally he has punished the child, that child has died. There have been incidences like that. They have got disability because of brutal punishments. क्योंकि एक custom है, कोई इसको पूछता नहीं है. There is absolutely scapegoat view जिसे कहते हैं, बलि का बकरा बनाना, venting out your personal frustrations. एक अलग custom और चलता है, that is known as fire walking. There is that burning coal is there and you walk barefoot and people believe if you have a devotion. See, it's a matter of faith. Nobody can question that, right? But it is said that the custom sometime can promote what is known as conservative attitude, where maybe some practice is not right, but then you don't question that practice. You assume it to be right. Not only that, customs and traditions, they are regulating behavior also. People have a fear that if they don't follow a certain custom or tradition, they might be socially ostracized from the society. For example, caste endogamy. There have been incidences of honor killing, or for that matter, child marriage. You may not have to indulge in child marriage, but it is a custom in your community. So people don't have the courage to go against the custom. Why? Fear of ostracization. So this is nothing but how customs and tradition they suppress the reason. ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा पहले ये वाला आ गया यार. ओफो. You just need to give me 1 minute. क्योंकि ये हैंग हो गया अब. But anyway, did you understand the question? Did you understand the answer? ठीक है. Mostly society में until and unless elaborate या कोई और कीवर्ड दे रखा हो, we discuss both the side of the story. So, do you agree था? What are customs? What are traditions? How customs and traditions are strongly embedded in our group life, and often the origin and rationale beyond the customs and tradition are not being questioned or investigated. Sometimes customs and reason are antagonistic to each other. For example, अभी discuss किया child marriage, caste, endogamy, or there can be examples female genital mutilation, corporal punishment to children, or menstruating women not allowed to enter the kitchen or touch household objects, or fire walking. However, there is other side of the story where the same customs, they are helping in regulating the behavior. खुद सोचो, अगर customs tradition नहीं होंगे, everyone is going to act according to their own whims and fancies. It would create a social chaos in the society. So it does have a rationality behind it. तो ये नहीं कह सकते कि customs and tradition कभी rationality नहीं होती. It is through these customs and tradition we are able to ensure a collective fabric in the society. Same, reinforcing the collective sentiments by celebrating festivals or
tradition of donation or tradition of langar or Buddhist chanting of the mantras. So overall, if I have to conclude, I would say that we should not treat customs and tradition as cast in stone. Cast in stone matlab patthar ki lakeer. Those customs and traditions which are progressive, which are in sync with the law of land, which does not go against the constitutional provisions, it should be respected, preserved and followed. But if there are certain customs and traditions which are regressive in nature, then it needs to be done away with. Is this very clear for everyone? Why? Because it is our fundamental duty to develop scientific temper. तो चाहे फंडामेंटल ड्यूटी हो, स्टेट की तरफ से आंसर लिख रहे हो तो डीपीएसपी डाल देना, नेशन की तरफ से लिखना हो तो एसडीजी गोल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो सब डाल देना. सो इट ऑलवेज कम्स हैंडी. इज दैट क्लियर? अनदर क्वेश्चन. It is a simple question. It's a part of salient feature, that is family relationships. अच्छा, just for the advice, आप salient feature में क्या prepare करोगे? एक जल्दी से लिख लो, who are not the part of foundation course. You will prepare joint family. All those who are not having the access to the foundation classes, you will prepare joint family, caste system, patriarchy, diversity, multiculturalism, blend of tradition and modernity, cultural lag, Indian model of secularism. These are few basic salient features which you are going to discuss. Now, if we are discussing joint family, we are definitely preparing family relationship. Very quickly, it's the simplest question which could have been asked. What is the impact of work from home on family relationships? अब ये कोई मत कहना कि ये current affairs है, क्योंकि work from home is not new concept, right? It's just that it has become a new normal post-COVID period, या during COVID period. That's it. Is that very clear? Now, the question is, या फिर हम अगर कहना ही चाहते हो तो let's say it is a blend of static plus contemporary. So, impact of work from home on family relation. जल्दी से 2-4 points दो, we'll get over with this question. It's the simplest question that we can have. Work from home का मतलब समझते हैं? घर से काम करना, ठीक है? आपके family relationship पे क्या impact पड़ेगा अगर आप घर से काम कर रहे हो तो? बिल्कुल. Give me positive negative points. ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है. Reintegration of joint family, brilliant, we'll take that point. Very good. Any other person? See, you need to understand, you'll write, absolutely, he has said it correctly. It may have a positive impact, it may have a negative impact. Positive impact क्यों है? Because the time you are spending with your family is now getting increased. जिसकी वजह से दो चीजें हैं. एक, any kind of misunderstanding or communication gap can be reduced. In fact, there was a study by Nimhans which said कि 89% of the households जिनको उन्होंने survey किया था, जहाँ पे where there was high percentage of disputes and discords, after work from home, the incidences of disputes and discords have reduced. You can give better parenting and socialization to your children because now you are spending time with them, you know exactly what they are doing. The quality of time that you are spending with your family, no longer it's a matter of luxury. Now, since you are working from home, you are not spending time in traveling, so you are saving that time and you are spending it with your family members. The conjugal husband-wife relations have improved. The sexual division of labor has got diluted. अब लड़के भी घर का काम कर रहे हैं. At least if not working, they are recognizing the significance of unpaid work which is being done. So there is a positive side. But at the same time, there is also a negative side. So very quickly, overall work-life balance is getting improved. The affordability of the family time, improved relationship, where the rate of disputes and discords have been very high. Overall solidarity and cohesion is improving in the family due to better communication, better joint conjugal roles. Husband-wife relations are also improving. So this is one side of the story.
Similarly, parent-child relation, better socialization, better democratic parenting. You said reintegration of joint family. The collective fabric is getting strengthened. Most importantly, क्योंकि work from home है, women is able to work, because of which she is getting access to financial independence. So her relation or the marital dynamics is favoring women now. So that is another way of saying that family relationships are improving. But overall, incidences of domestic violence, incidences of punishment, the physical punishment to the children, problem of over parenting, most importantly, work-life balance actually has been disrupted. You are always working. एक नया problem आ गया है, the burden, the dual burden on women is significantly getting increased because the person who's working is always at home. So that is becoming very challenging. What about those families who are living in a closed space? So managing the work at home is becoming a challenge. So in fact, the disputes and discords are also increasing. Is it making sense? The quantity of time you are spending, although has increased, but the quality has declined. There is growing anxiety because you actually don't know how you are faring at your workplace. रोज जब ऑफिस जाते थे पता चलता है बॉस क्या सोच रहा है, कोलीग्स कैसे वर्क कर रहे हैं, आगे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस पर क्लैरिटी होती है. जब वर्क फ्रॉम होम होता है यू आर वर्किंग इन आइसोलेशन. सो इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ विच फाइनली इज इम्पैक्टिंग योर फैमिली रिलेशनशिप्स. इज इट मेकिंग सेंस? बस यही सारे पॉइंट्स हैं. इसमें कौन पढ़ाएगा? ये तो आपने आसपास देखा ही है कि वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे क्या हो रहा है. दैट इज सपोज टू बी रिटन. एंड फाइनली एक कंक्लूजन लिखेंगे दैट वर्क फ्रॉम होम इज एक्चुअली ब्रिंगिंग टू वर्ल्ड्स टुगेदर, पब्लिक एंड प्राइवेट. इट नीड्स टू बी प्रॉपरली मैनेज्ड क्योंकि अब ये न्यू नॉर्मल है. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द कल्चर ऑफ वर्क फ्रॉम होम. You need to address the problems in work from home culture. That needs to be done. Is this very clear for everyone? Making sense? Okay, chalo. Read this question. How does Indian society maintain continuity in traditional social values? Enumerate the changes taking place in it. अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप मुझे दोगे. इसमें एग्जैक्टली पूछ क्या रहे हैं? How does Indian society maintains continuity in traditional social values? Enumerate changes taking place in it. नहीं, यही मैं जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने पूछा. अब फिर से पढ़ो. नहीं, forget about joint family, just read the first line. वो ये नहीं पूछ रहे कि ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज किस फॉर्म में कंटिन्यू कर रही हैं. वो ये मान के चल रहे हैं कि ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज कंटिन्यू हो रही हैं. आप बस ये बताइए कि वो कंटिन्यू कैसे हो रही हैं. Exactly. It is getting continued because of social media. Social media, through technology, we are becoming, in fact, more aware about our traditional social values. We are actually asserting our traditional social values. दूसरा सबसे major technique, socialization. Socialization by family. Family is the first agency which socializes us with respect to our traditional values. And not only it is socialization, it is also mechanism of conditioning, rewards and punishment. If you follow the traditional values, you would be rewarded. If you don't follow, you would be punished. Are you getting the point? Constitutional provisions, where there are provision which helps us to preserve our traditional values, customs and practices. If I have to talk, let us say, with respect to the values related to caste system, identity politics.
Identity politics is also helping us to preserve our traditional values. Are you getting the point? यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि what were the traditional values and how they are existing. मुद्दा है how they are preserved. फिर वो खुद भी मान के चल रहे हैं कि कुछ वैल्यूज हैं जो चेंज हुई हैं, तो वो ये नहीं पूछ रहे क्यों हुई, कैसे हुई, वो बस ये कह रहे हैं एन्यूमरेट कर दो कि कौन सी चेंज हुई. बस एन्यूमरेट का मतलब होता है लिस्ट कर दो. Is it making sense? Let's see the question. Social values which have been a part of traditional Indian society, for example, tolerance, spiritualism, familial obligation, delayed gratification, caste-based value system. You can write, this is nothing but the traditional values. There have been various forces of change, but irrespective of those forces, the traditional values have continued to exist. Why they have continued to exist? Socialization, societal compulsions, celebration of festivals, migration, social media, constitutional provisions, or for that matter, identity politics. Did you get the point? The question was not on the values. The question was why the value, oh, how the values are existing. Why भी नहीं था, how था. बस ये छोटी छोटी चीजें हैं और आंसर पूरा बदल जाएगा. So how is the mechanism? अब आपको बताना है, however, the values do not always remain static. They are undergoing some change. So you just have to enumerate the changes. कि किस तरह से because of same social media comparison आ गया है, because of which people are indulging into consumerism and materialism. Similarly, because of globalization, because of industrialization, urbanization, there is emergence of nuclear family. So that joint family culture and value system is getting diluted. Rather than thinking about collectivism, we are going for individualism. Rather than going for delayed gratification, we are going for immediate consumption. Are you getting my point? Right? Similarly, because of industrialization, वो जो caste-based division of labor था, it has been removed. Ritual-based hierarchy has been removed. What we are now getting is the secular status. With more better education system, we are moving towards rationality and scientific temper. So it is not about positive or negative. It is just about which value system is undergoing a change. We did have patriarchal values. By traditional society, patriarchal values, but today we are talking about gender equality. So values have underwent a change. And finally, you can conclude that no society remains static. It is always in the evolving mode. Hence, values also undergo a change. Is it making sense for everyone? See? ये एक important question है, इसको लेते हैं, because many were fearing this question. Is it visible for everyone? Right? Analyze the salience of sect vis-a-vis caste, region, religion in Indian society. To be honest, अगर ये question कहीं फंसना चाहिए था, तो सिर्फ एक जगह, वो था region. अगर आपने sect पढ़ रखा है, तो vis-a-vis caste and religion, that should not have been a problem. अगर किसी का जानते हुए भी sect फंसा होगा, तो वो बस एक जगह, that is region. But in fact, that can also be managed. But anyway, let's just have a look. Any idea what is a sect? Subset. Okay. Rather than saying subset, let's say offshoot. ये एक existing dominant religion है. There is a certain section in the society, in this religion, which does not agree with the existing interpretation of the religion. So now they have broken away from the dominant religion. They have created their own group based on different interpretation of the religious ideology. For example, Shia, Sunni, these are nothing but sects. Catholics and Protestants, they are nothing but sects. Nirankaris are nothing but sect. Are you getting the point? So existing religion, the offshoot from the existing religion due to disagreement on the existing interpretation of the religion is known as a sect. And sect is a very rigid group. If you become a member of a sect, you cannot digress from the existing beliefs and doctrines. So you have to be committed to the belief system of the sect. For example, आप ये नहीं कह सकते आज आप शिया कल आप सुन्नी, ये नहीं हो सकता. If you are a member of a sect, you have to be deeply committed to the beliefs of that sect.
Is this very clear? So it says that a group which broke away from the dominant religion because of disagreement over interpretation of religion is known as sect. Pehli cheez. It is the offshoot of the existing religion. Members are always expected to be deeply committed to the beliefs. Members, they join voluntarily and they voluntarily adapts the lifestyle and beliefs of the sect. I have given all the features. Yes, we can say that. Yes. That depends. That is altogether a different topic. That's altogether a different topic. Okay? That is the result of cultural innovation and importation. For example, you are also looking for salvation, but you are not happy with the existing path to salvation. So then you are looking for some alternative path to salvation. So then you become a member of cult. So cult is a loose-knit organization. It is not as rigid as a sect. So, and cult is defined as a result of cultural innovation or importation. Many a times cult is used as a negatively connoted term. But if we study cult in a sociological domain, it just says cult is a loose-knit organization which is a result of cultural innovation or some cultural importation from outside. Some culture you have imported from outside. Then it results into formation of a cult. There is one example of cult, that is audience cult, where it is more related to a customer service. You went to a particular cult, you were not satisfied with the services, you joined another cult. You were not satisfied, you were seeking something, whether it is peace of mind or anything. You did not get the peace of mind there, you joined some another cult. That does not happen in context of a sect. So that is why we say cult is a loose-knit organization. Okay? Anyway, so salience of sect vis-a-vis caste. There are three topics in this question: caste, region and religion. अब एक सिंपल सा लॉजिक है, ये कहा जाता है, इसमें हम पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, जैसे मैक्स वेबर हैं, वो कहते हैं कि सेक्ट इज नथिंग बट द रीजन बिहाइंड एमर्जेंस ऑफ सेक्ट इज थियोडिसी ऑफ डिसप्रिविलेज. कुछ लोग होते हैं हु आर नॉट सैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम. So in order to help them feel better, there is an offshoot which is being created known as a sect. For example, it is believed that a characteristic feature of a caste के ही context में पूछा है ना, characteristic feature of caste system क्या है? It's a system of purity of pollution. It is a system of stratification which has resulted into discrimination. What kind of discrimination? Let us say practice of untouchability, right? So what happened was that the people who were feeling lonely, the people who were feeling anxious, the people who were feeling troubled, why? Because they think that they were trapped in the caste system and they were subjected to the evils of untouchability and purity and pollution. These people were getting attracted by the new perspective which was offered by a sect. So often it is seen that sect consists of people who are largely belonging to the marginalized section of the society. Why? Because that marginalized section of the society at the current situation is feeling helpless. It is feeling troubled. It feels as if they are being discriminated. So in order to get relief out of it, that is why it is said it is a theodicy of disprivileged. And that's a perspective of Max Weber, where he says that usually sects are attracting the people who are belonging from the marginalized section of the society. तभी हम उसे कास्ट से लिंक कर सकते हैं. ऐसे तो लिंक करेंगे. उन्होंने यही तो पूछा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्ट विसवी कास्ट, क्योंकि कास्ट में एक डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस हो रहा है, वेयर अनटचेबिलिटी इज गेटिंग practiced. So the people who are being troubled because they feel they are trapped in the domains of caste, they are being subjected to purity and pollution and untouchability, they are seeking relief somewhere. So those people, they break away from the existing religion and they are constituting what is known as a sect. Is it making sense for everyone? ठीक है? So अनलाइक स्ट्रैटिफाइड, और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह से कास्ट सिस्टम स्ट्रैटिफाइड होता है वैसे सेक्ट स्ट्रैटिफाइड नहीं होता. इनफैक्ट इट इज सेड दैट सेक्ट आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन द हायरार्की ऑफ अ पेड ऑफिशियल. और अगर कोई कहते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है तो वो लार्जली कैरिस्मेटिक लीडर होता है अराउंड विच द सेक्ट हैज बीन formed. Otherwise, sect में कोई hierarchy of officials
नहीं होती है. So irrespective of which caste you belong to, you get equality status in the sect. तो सेक्ट दो रीजन से बनते हैं. एक, टू रिजेक्ट द कास्ट ऑर्डर, और समटाइम्स सेक्ट आर क्रिएटेड टू रीइंफोर्स द caste order. For example, I have given the examples of the sect. Is it making sense for everyone? There has been sect like Ravidasya sect. There have been sect like Kabir Panth sect. That was basically they were rejecting the existing caste system. On the other hand, there have been emergence of sect where they were trying to reinforce the caste order. So there is also an example. यहाँ पे मैं religion का example नहीं दूंगी. यहाँ पे sect is vis-a-vis caste. आप लोग सोच रहे होगे इतनी देर से कि मैंने वो religion वाले examples क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे sect is vis-a-vis caste. जब sect vis-a-vis religion पढ़ेंगे तब हम वो examples देंगे जो आप दे रहे थे. Is it get clear? ठीक? So this question has 3 parts to it. Second part is sect vis-a-vis region. कभी कभी होता है कि सेक्ट किसी स्पेसिफिक रीजन में भी इमर्ज करता है. देखो, सेक्ट यही है ना, यू आर नॉट हैप्पी विद द एग्जिस्टिंग ऑर्डर. तो सपोज करो कोई फॉरेन इन्वेजन हुआ, दे आर ट्राइंग टू पॉलिटिकली डोमिनेट यू. सो इन दैट सिनेरियो यू क्रिएटेड योर ओन सेक्ट सो एज टू गिव दोज पीपल ऑल टुगेदर अ न्यू सोशो कल्चरल पॉलिटिकल विजन. तो कभी कभी सेक्ट कैन ऑल्सो बी रीजन बेस्ड. एक दूसरा रीजन हो सकता है, कोई कोई रीजन होते हैं जो बहुत डेवलप कर जाते हैं. जब आप बहुत डेवलप कर जाते हो तो हो सकता है इकोनॉमिकली यू आर नॉट ट्रबल्ड बट स्पिरिचुअली यू आर ट्रबल्ड. व्हाट इफ एवरीवन इज लिविंग देयर इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ एंड यू आर सीकिंग स्पिरिचुअलिज्म, यू आर सीकिंग दैट कलेक्टिव कॉन्शियस. तो वो जो सेक्ट है ना, वो आपको वो कलेक्टिव फीलिंग देता है. तो कभी कभी द सेक्ट ऑल्सो इमर्जेस ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनल क्राइटेरिया, एंड दैट रीजनल क्राइटेरिया कैन बी दोज रीजन्स हैव डेवलप्ड और देयर हैज बीन सम एक्सटर्नल रूल देयर. इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेकन द एग्जाम्पल्स हियर. यू कैन रेफर टू द एग्जाम्पल्स, बोथ द एग्जाम्पल्स. फॉरेन रूल का भी हमने एग्जाम्पल दे रखा है, एंड इट इज ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू दी अफ्लुएंट रीजन्स. फॉर एग्जाम्पल, निरंकारी सेक्स में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो अर्बन ट्रेडिंग कम्युनिटी के हैं, और वहां सिखाया जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, पीस ऑफ माइंड. ठीक है, सो दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन. ये सबको पता था क्योंकि लोग सेक्ट को ऐसे ही पढ़ते हैं कि सेक्ट इज एन ऑफशूट ऑफ एग्जिस्टिंग रिलीजन. सो इन एवरी रिलीजन यू विल फाइंड द एमर्जेंस ऑफ सेक्ट. आई हैव टेकन योर एग्जाम्पल, इट्स हियर. Is this clear for everyone? ठीक है. अब ये कैसे पढ़ेंगे, मुद्दा ये नहीं है, ये तो आ गया, ये कैसे पढ़ेंगे. अब यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सोसाइटी को आपको टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई कैन डू वन थिंग, आई हैव प्रिपेयर्ड A to Z ऑफ सोसाइटी where I have defined all the keywords, चाहे वो assimilation हो, ascriptive हो, achievement हो, gaslighting हो, multiculturalism हो, salad bowl हो, melting pot हो. मेरे हिसाब से 12-13 पन्नों की मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, मैं वो अपलोड करा दूंगी. दिस मच आई कैन डू. उसको जब भी आपको कोई टर्म नहीं समझ आए आप उसको खोल के देख सकते हो, उसमें टर्म प्लस एग्जाम्पल है. इज दिस वेरी क्लियर? दैट इज बेसिक मिनिमम जो पढ़ना चाहिए. उसके अलावा दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर. इज दैट वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? अगर मैं, ये मेरा खुद का मानना है, अगर डेफिनेशन और 2-4 एग्जाम्पल्स भी याद होंगे ना, 10 नंबर का क्वेश्चन लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है. यहां पे क्या हुआ, लोग कहां कंफ्यूज हो गए. एक तो सेक्ट ही नहीं पढ़ के गए थे, दूसरा अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा सेक्ट का तो वो उनको रिलीजन से था. दे डिड नॉट हैव द आइडिया, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये पढ़ा ही नहीं कि सेक्ट में कौन लोग मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. तो उन्हें सेक्ट का रिलेशन विथ रीजन एंड कास्ट नहीं पता था. उन्हें सिर्फ ये पता था हाउ सेक्ट इज क्रिएटेड, दैट इज एन ऑफशूट ऑफ एग्जिस्टिंग रिलीजन. बट हाउ इट इज एन ऑफशूट ऑफ एग्जिस्टिंग रिलीजन, वन ऑफ द रीजन माइट बी दैट दे आर फीलिंग डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ untouchability. So that aspect people didn't know. That is why sect vis-a-vis caste they were not aware of. Is that very clear for everyone? ठीक है, इतना कह सकते हैं. थोड़ा सा सोशियोलॉजी ऑप्शनल को यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है, बट उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है. ठीक है, एक आध क्वेश्चन की बात अलग है, वो तो फिर ज्योग्राफी में भी होता है कि थोड़ा एडवांटेज, या हिस्ट्री में भी होता है कि थोड़ा एडवांटेज. एनीवे, आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते थे. सेक्ट्स हैव प्रमोटेड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल हायरार्किकल प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन रीजन, रिलीजन एंड कास्ट. यही हो रहा है. सेक्ट इज ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम. व्हाई? बिकॉज इट वांट्स टू डेमोक्रेटाइज, क्योंकि सेक्ट में हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स नहीं होती. ठीक है. नाउ लेट्स डू वन थिंग. वी हैव 3 टॉपिक्स
and I'll discuss one question from each topic. बाकी जो remaining, ऐसे तो 18 questions हैं यार, कितने और डिस्कस करेंगे. तो आई 3 टॉपिक्स हैं, एक अर्बनाइजेशन है, एक आई थिंक मिसलेनियस है, और तो आई डिस्कस वन टॉप क्वेश्चन फ्रॉम देयर, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आर देयर एज अ पार्ट ऑफ द पीपीटी विच वुड बी अपलोडेड, सो यू कैन रेफर दैट. ठीक है. अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम एंड रेमेडीज, मोर और लेस हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है, एंड इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. ये देख लो, ये क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था एक्चुअली, कि ऐसे क्वेश्चंस तैयार कैसे होते हैं. अर्बनाइजेशन में कोई डीकंस्ट्रक्शन नहीं है, स्टैंडर्ड तरीका है. अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, सिलेबस में ही दे रखा है, ऐसे ही पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन देखो, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज रिलेटेड टू राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंजम्पशन. सोशियोलॉजी वाले खुश हो गए, न्यू मिडिल क्लास पे क्वेश्चन आ गया है. ठीक है. जो सोशियोलॉजी के नहीं थे वो ये सोच रहे थे यार ये न्यू मिडिल क्लास होता क्या है, मिडिल क्लास तो सुना है, ये न्यू मिडिल क्लास क्या है. वी शुड बी थैंकफुल टू यूपीएससी, उसने आगे एक और चीज लिखी है, विथ एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंजम्पशन. उन्होंने आपको एक्चुअली डेफिनेशन दे दी न्यू मिडिल क्लास की. न्यू मिडिल क्लास और एक्चुअल मिडिल क्लास में यही डिफरेंस है, दैट न्यू मिडिल क्लास इज गवर्न्ड बाय आइडियोलॉजी ऑफ कंज्यूमरिज्म. दे आर ड्रिवन बाय कल्चर ऑफ कंजम्पशन. इनफैक्ट लीला फर्नांडिस की डेफिनेशन है that new middle class is defined as that class which is urban living, which is working in private sector, which is English educated and is driven by ideology of consumerism. It's very clear. And how new middle class has emerged? It is the result of LPG. So post 1990s, what we are witnessing is emergence of new middle class. And the term new is used not because new people have entered. The term new is used because new value system has developed. एक जो traditional middle class थी ना, वो बहुत, how should I put it, they used to be very humble. They used to be very modest. उनके घर में पैसा है नहीं है ये सिर्फ बच्चे की शादी में ही पता चलता था थोड़ा बहुत, नहीं तो वो बहुत सिंपल लिविंग होते थे. लेकिन आज के टाइम पे देयर इज मोर एंड मोर कल्चर ऑफ शो ऑफ, देयर इज मोर एंड मोर कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म. सो दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर ऑफ न्यू मिडिल क्लास. तो अगर आपको न्यू मिडिल क्लास की डेफिनेशन नहीं भी पता थी तो भी यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन में दे दी है. अब मुद्दा ये है कि न्यू मिडिल क्लास है, जो मेन क्वेश्चन वो बस इतना है कि न्यू मिडिल क्लास की वजह से टीयर 2 सिटीज का ग्रोथ कैसे हो रहा है. टीयर 2 सिटीज कौन सी होती है? मुझे डेफिनेशन नहीं देना टीयर 2 सिटीज की, एग्जाम्पल्स दो. 50,000 to 1 लाख. ठीक है. तो जैसे कानपुर हो गया, पौंडीचेरी हो गया, पुणे हो गया, चंडीगढ़. हाँ ठीक है, नहीं आजकल आ रही है. सो द पॉइंट हियर इज कि टीयर 2 सिटीज के आपको एग्जांपल्स पता चल गए. अब थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाते हैं. मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि हर क्वेश्चन आप तैयार नहीं कर सकते. थोड़ा सा सोचो, न्यू मिडिल क्लास में कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म है, कंजम्पशन है, इसकी वजह से टीयर 2 सिटी ग्रो कैसे कर रही है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. स्पिल ओवर इफेक्ट हो जाएगा, एंसिलरी इंडस्ट्रीज ग्रो करने लग जाएंगी. अब आप सबसे बड़ी बात देखो, क्या हुआ कि ये जो न्यू मिडिल क्लास के लोग हैं, मैंने बोला ये इंग्लिश एजुकेटेड है, इंग्लिश स्पीकिंग है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ये बेचारे उठ के मेट्रो सिटीज़ में आए. मेट्रो सिटी में ओवर अर्बनाइजेशन हो गया. यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई. फिर क्या हुआ, डिजिटल रेवोल्यूशन आने लग गया, वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप होने लग गया. फिर क्या हुआ, इन्होंने सोचा इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लेट्स मूव बैक टू द टीयर 2 सिटीज. टीयर 2 सिटीज में अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यू हैव वर्क फ्रॉम होम culture, you can start living your life in tier 2 cities now. You started living in tier 2 cities, now you are earning money, you have disposable income and you have access to technology and social media. आप देख रहे हो और लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पहन रहे हैं, तो अब आपने भी वो डिमांड, क्योंकि कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म आपका डिफाइनिंग फीचर है. और अब ई कॉमर्स का तो टाइम है, आपको बस एक क्लिक करना है, अमेजॉन आपके घर में सामान पहुंचा रहा है.
और उसमें भी क्या है कि ईज ऑफ पेमेंट भी हो गया है। आजकल एक नया कल्चर चलता है, क्रेडिट कार्ड कल्चर, 0 EMI। पहले लोग उतना खर्च करते थे जितना पॉकेट में हो, अब पहले लोग खर्च करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे बढ़ा जाएगा। तो ईज ऑफ कंजम्पशन भी हो गया है, डोर स्टेप डिलीवरी भी हो गई है। अब बिजनेस वालों ने सोचा कि यार ये तो अच्छे मुर्गे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट अच्छे से खरीदेंगे, अब हमको इनको टारगेट करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑफर्स लाने शुरू कर दिए, कूपन सिस्टम लाना शुरू कर दिया, कैशबैक लाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अब आपको अट्रैक्ट कर रहे थे। और आप ये सब इसलिए कंज्यूम कर रहे हो बिकॉज यू बिलीव कि दिस इज हाउ अ पर्सन हु इज अर्निंग मनी शुड लिव देयर लाइफ। सो यू स्टार्टेड डिमांडिंग द प्रोडक्ट्स। अब सपोज करो पहले उस टियर 2 सिटी में किसी कार का 10 ग्राहक थे, कस्टमर्स थे, बट बिकॉज दीज पीपल हैव मूव देयर, नाउ दे वांट कार्स ऑल्सो। भले वो यूज कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन भाई इट इज अ स्टेटस सिंबल। नाउ यू वांट अ सर्टन ब्रांड कार, ऑल ऑफ अ सडन 1000 2000 और मोर देन दैट डिमांड्स हैव बीन क्रिएटेड। वो सर्विस सेंटर खोलेंगे वहां पे। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको पता है कि दिस इज माय कस्टमर बेस, तो वो वहां पे ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स खोलेंगे, जहां पे जो ब्रांड है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है अपने कस्टमर्स से। तो आर यू सीइंग दैट टियर 2 सिटीज आर गेटिंग ग्रोथ? अब दूसरा क्या, नाउ दे हैव मनी, दे हैव टू इन्वेस्ट, और यहां की सिटीज में रियल एस्टेट अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। सो नाउ यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, एज यू सेड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। If construction would get started, it would create demand for the ancillary areas. So this is how tier 2 cities are growing. Did you get my point? Startup culture is emerging in tier 2 cities. So this is how the answer writing has to be done. Now let us just very quickly look at the question. This is what is new middle class. We have already discussed the definition of new middle class. New middle class is, now, primarily, middle class was responsible for growth of metro cities. Now, expansion of new middle class is responsible for growth of tier 2 cities. You should have example of who are or which cities fall under the bracket of tier 2 cities. In fact, it is believed that these tier 2 cities have recorded economic growth of 40%. Now, the question is how it happens. When overcrowding of metro cities takes place, people start finding alternatives in tier 2 cities. Once you move to tier 2 cities, since you have more disposable income, your purchasing capacity is high. You will start spending money in order to improve your standard of living. After that, with economic liberalization and globalization, there is rise of service sector. अब मैंने प्लस लिखा है, एरो नहीं। राइज ऑफ सर्विस सेक्टर के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ सोशल मीडिया आ रहा है। जब ये चारों फैक्टर्स हैं तो आपकी कंजम्पशन हैबिट्स चेंज हो रही हैं। उसकी वजह से आप डिमांड कर रहे हो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। विथ ई कॉमर्स एंड डोर स्टेप डिलीवरी अब ईज ऑफ कंजम्पशन हो गया है, डिमांड हैज इंक्रीज, नाउ इट इज लीडिंग टू बूस्ट इन टियर 2 cities. When you compare yourself on social media with others, you are feeling relatively deprived, which will further trigger your consumption levels. Then change in values. अब क्या है, कहीं ना कहीं lack of content होता है, तो जब lack of content होता है ना, we start consuming materialistic products in order to make ourselves happy. So this is what it is happening. Is that very clear? Similarly, क्योंकि greater returns हैं, people have started investing in real estate. Similarly, easy access to financing facilities, यही मैं बात कर रही थी, zero cost EMI और pre-activated credit cards. Overall consumption in NMC has increased and which has resulted into emergence of large, medium and small enterprises. सबको दिख रहा है यहाँ पे डिमांड अच्छी है, तो सब थोड़ा थोड़ा बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लार्ज लेवल, मीडियम लेवल एंड स्मॉल लेवल। अब बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी चेंज हो रही हैं। अब वो अफोर्डेबल लग्जरी आइटम, टाटा क्लिक, एक click and they are making those luxury items being available to you at an affordable price. How? By offering you coupons and cashbacks. The government has also taken initiatives to further ensure the growth of tier 2 cities. In fact, according to Ministry of Commerce and Industry, 50% of recognized startups are in tier 2 and tier 3 cities. In fact, 976 MNCs have set up these many global in-house centers, जिसमें से 68 global in-house centers are in tier 2.
ग्लोबल इन हाउस सेंटर मतलब वो सेंटर्स जहां पे जो ब्रांड्स होते हैं ना, ग्लोबल ब्रांड्स, वो अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकें। जितनी आप उन्हें अच्छी कस्टमर सर्विस दोगे उतना ज्यादा वो अपने ब्रांड्स को कंज्यूम करेंगे। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। इज दैट वेरी क्लियर? Then, riding on the back of NMC's consumerism, tier 2 cities are emerging as a force behind economic growth of the country. बात खत्म। आपको सारे पॉइंट्स नहीं लिखने थे, आपको 3-4 पॉइंट्स भी लिख देते, आपको मार्क्स मिल जाते। इज इट वेरी क्लियर? तो कभी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि अरे न्यू मिडिल क्लास क्या है, वहां दे रखा है कि न्यू मिडिल क्लास क्या है। ठीक है, नाउ वील मूव टू अनदर टॉपिक दैट इज पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, जस्ट मेक अ नोटिंग कि क्या पढ़ना है आपको उसमें। फर्स्ट, डिबेट विथ रिस्पेक्ट टू हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, डिबेट विथ रिस्पेक्ट टू हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। Second, the concept of demographic dividend. Third, factors behind population change. जिसमें आप 3 चीजें पढ़ोगे, फर्टिलिटी और डिटेल में पढ़ोगे, मॉर्टैलिटी एंड माइग्रेशन। फिर चौथा हम पढ़ेंगे वल्नरेबल सेक्शंस। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ जीएस पेपर 1 and 2, वल्नरेबल सेक्शंस। क्योंकि विमेन और कास्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसके अलावा आप पढ़ोगे ओल्ड एज, यू विल स्टडी चाइल्ड, ट्रांसजेंडर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ लिया है तो ठीक, नहीं तो यहां पढ़ोगे ट्राइबल्स। इसके अलावा फिफ्थ थिंग दैट वी विल स्टडी इज पॉपुलेशन पॉलिसी, और पॉपुलेशन पॉलिसी को डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, एवोल्यूशन, जो भी उसमें लैक्यूना है, एंड व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो एक टॉपिक है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, लेकिन पढ़ना ये है, हर साल क्वेश्चन आता है। जितना आप डीकंस्ट्रक्ट करके पढ़ोगे उतना बेटर है। क्लियर है? ठीक, लेट्स क्विकली टेक द क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन सिंपल था, ये हम पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन सपोज करो आई हैव टू एड्रेस बोथ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, फाउंडेशन एंड नॉन फाउंडेशन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पढ़ो, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन and point out the measures which have been taken in India to achieve those objectives. When you study population policy, you will study population education. So you would be knowing what are the objectives. Let us assume you did not study population policy. You did not know what are the objectives of population education. Common sense क्या कहता है कि population के बारे में आप educate कर रहे हो, उसके objectives क्या होने चाहिए? अच्छा, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या होती है? ओके, द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड एवरीथिंग। ठीक, हाँ हाँ, एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं पूछ रहे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। आई हैव टू एजुकेट यू अबाउट द पॉपुलेशन. What all should I tell you? What is the current demographic status?
डेमोग्राफी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। पहली चीज मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। फिर हम सबको पता है हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है थोड़ी, ठीक है, तो हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, what are the consequences of this high population for the individual, family, community, nation, to convince you that you need to control the population. Then I have to tell you कि population growth और development का relation होता है. The more the higher population is, the lower would be the prospects for development. I also will have to tell you कि population growth का environment पे क्या negative impact है. Then I will convince you that you should appreciate the fact that the desirable form of family is a small family. Why it is the desirable form? Because it has certain benefits. Then you are convinced that let's go for small family. But then I have to make you aware about family planning methods. And not only make you aware, I have to empower you so that you can make your own choices with respect to reproductive health. And then I have to make you understand that every choice that you make is not only impacting you, but also impacting others in the society. आप कभी सोचो, 2 मिनट शांति से सोचो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन मतलब इफ आई एम एजुकेटिंग यू अबाउट द पॉपुलेशन, व्हाट ऑल एरियाज आई हैव टू कवर, बिकॉज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. नॉट एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग पॉपुलेशन पॉलिसी. अगर आप फाउंडेशन कोर्स में हो, आपने पढ़ा है, बट हम ये नहीं मान के चल रहे ना कि आप सभी फाउंडेशन में हो. लेट्स अज्यूम यू आर नॉट देयर, फिर क्या करोगे? तो अगर सिर्फ हमको इतना भी पता है, just give me 1 minute, read this. What are the objectives of population education? पहले पता तो हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज नथिंग बट डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस. फिर पता हो कॉजेज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. फिर पता हो व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज पॉपुलेशन ट्रेंड्स ऑन सोशो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक aspect. Then we should know what is the relation between growth and development process, then impact of overpopulation on environment, then develop the appreciation of the fact that small family is desirable, then awareness about population policies and programs, that is nothing but your family planning methods and everything, then empowering the learners to take informed decisions, and finally how action of individual members affect others. आपको ये सारे नहीं लिखने थे, it's a 10 marker question. अगर आपको 3-4 भी आप लिख सकते हो तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज दिस इज फर्स्ट हाफ ऑफ योर आंसर. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? डोंट लीव द क्वेश्चन. अदरवाइज मैंने आपको फ्लो चार्ट दे दिया है, वैसे तैयार करके जाइएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा. ठीक है, एक ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरी नेशन विल हैव अ डिफरेंट पॉपुलेशन पॉलिसी. Every nation will have different objectives of population education because that would depend upon their demography. Is it making sense? ठीक है. Now, once we know this, we need to appreciate the fact that our government has taken a lot of efforts. और ये आप कहाँ पढ़ते हो? मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी, evolution of population policy. लिखवाया है ना वो पॉइंट. जब आप evolution तैयार करोगे ना, आप ये पॉइंट्स पढ़ोगे, क्योंकि एवोल्यूशन का मतलब ये है कि पहली बार 1952 में एक नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था. उसके बाद बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे, क्लिनिकल अप्रोच, एक्सटेंशन अप्रोच, सिलेक्टिव अप्रोच, कैफेटेरिया अप्रोच, बट जब कुछ नहीं हुआ तो पहली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1978 में आई थी, और उसी का पार्ट था पॉपुलेशन एजुकेशन. उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे कि पॉपुलेशन एजुकेशन शुड बी मेड द पार्ट ऑफ स्टडी करिकुलम. तो 1986 तक दिस पॉपुलेशन एजुकेशन वॉज अंडर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. लेकिन जब 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, देन पॉपुलेशन एजुकेशन बिकेम द पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. And when it became the part of national education policy, then we started promoting population education first at school level, then we promoted at higher level. एक लाइन, कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो. Then currently also we are talking about making it part of adult education under national education program. ठीक है, policy. Then there is also a provision for out of school adolescents. मैंने आपको डिटेल में सिर्फ इसलिए दिया that those who don't have access to classroom program, they get the enough fodder. So this is a detailed answer. आपको लिखना एक ही एक पॉइंट है, मैंने आपको डिटेल में दे दिया. फिर आपका कंक्लूजन. Is this very clear for everyone? Is it making sense? ठीक. नेक्स्ट एक क्वेश्चन बस पढ़ लेते हैं ट्राइबल्स पे.
देखो ट्राइबल्स इनका फेवरेट टॉपिक है। ट्राइबल्स पे इन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन्होंने एक बार पूछा विच आई टोल्ड यू, सेक्स रेशियो अमंग ट्राइब्स इज बेटर देन सेक्स रेशियो अमंग शेड्यूल्ड कास्ट। एक साल इन्होंने पूछा दैट व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पूछा ना स्टार्ट, मतलब, और ये आप पॉलिटी में एनीवे पढ़ते हो। फिर तीसरे साल उन्होंने पूछा कि एन्यूमरेट एनी टू लीगल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स। तो अब उसमें आप पेसा लिख सकते थे, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट लिख सकते थे, एफआरए लिख सकते थे, उन्हें कोई दो का एनालिसिस चाहिए था। ये भी आप पॉलिटी में पढ़ते हो। आप पॉलिटी में ये प्रोविजंस पढ़ते हो ना, पेसा पढ़ते हो ना डिटेल में, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी पढ़ते हो, ठीक है। तो आप इन्हीं दोनों चीजों को लिख के एनालाइज कर सकते थे। फिर इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा, गिवन द डाइवर्सिटी अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल कैटेगरी। क्वेश्चन पढ़ो। आपको ये पता है ना कि ट्राइबल कम्युनिटीज डाइवर्स हैं, ये सबको पता है। Central belt tribals would be very different from northeastern tribals, would be very different from northwest tribals. So diversity exists with respect to region also. Even among the northeast, the tribals are very different with respect to their traditions, their culture, practices, political structure, etc. Is it making sense? With respect to language also they are very diverse, ठीक है। Even with respect to economic development also they are very diverse. Why? Because within the tribals there are subcategories like PVTGs and denotified tribes. Even with respect to the population, the number of tribals are also very different. Some tribes are very high in population, Santals, Gonds, Bhils, whereas on the other hand there are some tribes whose number is even less than 200. For example, Andamanis or Birhar tribe of Madhya Pradesh. So the diversity exists with respect to language, diversity exists with respect to culture, diversity exists with respect to economic growth, diversity exists with respect to numbers, diversity exists with respect to region. So yet diversity, even religion also. There are many tribals who have converted to different religions, whereas on the other hand some tribals are even today practicing their own traditional culture. So even with respect to religion and cultural practices, tribes are very different. Even then, there is certain aspect where tribes can be considered as a single category with respect to their experiences, with respect to their backwardness, with respect to the problem related to social infrastructure, चाहे health हो, education हो, accessibility हो, multidimensional poverty हो, skill development हो, displacement ho due to development, culture is getting dominated by others, homogenization of their culture, encroachment by the outsiders. So disproportionate burden, development induced displacement, or harmony with the nature. Almost across the space, all the tribals, they live in harmony with the nature. They have altogether a different relation. That is why they say that customary rights of tribals needs to be recognized and protected. Same holds true for their cultural preservation. So overall, we can conclude that despite cultural diversity, it is their life experiences, it is their vulnerability which acts as a string along with all of them are threaded. और फिर आप conclude कर दो. Is that very clear? जब आप tribes पढ़ोगे, ये चीजें आप पढ़ते हो कि tribes are diverse, problems और issues related to tribes आप पढ़ते हो. तो tribes as a topic भी अगर पढ़ना है ना, who are tribes? What are the rights of tribes? What are the issues which tribes? लिखो. एक बार एक बस we'll discuss one more question after this and then we'll wind up. बस एक tribes का point लिखो. Who are tribes? Issues confronted by tribes. Issues confronted by tribes. और issues को ना bracket में दो parts में divide करना. Pre-independence and post-independence. Pre-independence and post-independence. Third point लिखेंगे. Approach with respect to tribals. Approach with respect to tribals. और bracket में लिखो isolation, assimilation and integration. तीन approaches हम पढ़ेंगे. Isolation, assimilation and integration.
Next. Characteristic features of tribes. Characteristic features of tribes. इसमें हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन ट्राइब्स. यहां पे हम पढ़ते हैं द यूनिक ट्राइबल कल्चर एंड नॉलेज. यहां पे हम पढ़ेंगे वेरिएशन सच एज पीवीटीजीज, डीनोटिफाइड, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स. नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइब्स. और जब आप गवर्नमेंट प्रोविजंस पढ़ रहे हो तो यू विल स्टडी ब्रैकेट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, स्टैट्यूटरी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी एक्ट, स्कीम्स, एजेंसी. एजेंसीज में हम ट्राइफेड को भी पढ़ेंगे और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी पढ़ेंगे. अब इतना एफर्ट करने के बाद भी ट्राइबल प्रॉब्लम्स आज भी कंटिन्यू कर रही हैं. व्हाट आर द लैक्यूनास, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? व्हाट आर द लैक्यूनास एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? बस एक बात का ध्यान रखना, जब आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब्स पढ़ रहे हो, वैसे आप सिक्योरिटी में पढ़ते हो, बट उसमें एक पॉइंट ऐड करो, ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उनके इश्यूज को आप अलग से डिटेल में पढ़ते हो, विच इज कवर्ड इन योर सिक्योरिटी. ठीक है ना? दिस इज हाउ द कंप्लीट पिक्चर. इसको एक जगह लिखो. अब इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स कहां, कुछ आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ते हो, कुछ आप सोसाइटी में देख रहे हो, कुछ आप सिक्योरिटी में पढ़ रहे हो. सो दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड. और ट्राइबल मूवमेंट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी छूट रहा है, सब आपने पढ़ा है. ठीक है, वील जस्ट टेक वन मोर टॉपिक. ये मिसलेनियस है. यहां पे यूपीएससी फिर कुछ भी पूछता है. ठीक है, ऐसे हर साल नहीं होता है. और ये क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस में डाला सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है. अदरवाइज द क्वेश्चन इज गुड. अब वो जब तक हैंग हो रहा है, आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया contributed to the functioning of education system in the country? Elaborate your answer. इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता था, बट इसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, वो मैं बता देती हूँ. अब एक बात बताइए, आपने प्री के बाद ही आप मेंस दे रहे हो. प्री में आपने डिजिटल इनिशिएटिव्स पढ़े होंगे, आपने वो स्वयं प्रभा, ये सब पढ़ा है ना, दीक्षा, ठीक है, नीट, निष्ठा पोर्टल, ये सब हम पढ़ते हैं ना. ठीक है, वही सब लिखना है इस आंसर में. बस इतना है कि मैं आपको ब्रॉड हेडिंग बता देती हूँ तो आंसर राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम एजुकेशन या हेल्थ की बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर 4AQ: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस एंड क्वालिटी. ठीक है, अब मुझे ये आंसर लिखना था. पहले मैं ये बता दूं कि एजुकेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री. But with respect to our education system, there exist challenges such as quality, accessibility and affordability. मैंने ये 3 पॉइंट्स लिए क्योंकि इन तीनों से रिलेटेड मुझे डिजिटल इनिशिएटिव्स आते थे. आप समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? कि मैंने बोला कि चैलेंजेस ही यही हैं, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. अब मैंने एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड क्या डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं? स्वयं, प्रधानमंत्री ई विद्या, स्वयं प्रभा. दीज आर द डिजिटल इनिशिएटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेसिबिलिटी. अब जब क्वालिटी इंप्रूव करनी थी तो दीक्षा. विद इन क्वालिटी अगर मुझे लर्निंग आउटकम देखना है तो नीट, सारांश. अब मैं यहां पे आपको स्कीम्स नहीं एक्सप्लेन कर रही हूं. क्वालिटी ऑफ टीचर्स इंप्रूव करना है तो उसके लिए निष्ठा पोर्टल भी है और दीक्षा प्लेटफॉर्म भी है. अफोर्डेबिलिटी, ऑनलाइन एजुकेशन वैसे ही चीपर होती है तो इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेबिलिटी. लेकिन नॉट एवरीथिंग इज गुड. देयर इज अ प्रॉब्लम कि देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड. वेदर इट इज बेस्ड ऑन जेंडर, वेदर इट इज बेस्ड ऑन क्लास, वेदर इट इज बेस्ड ऑन रूरल और अर्बन aspect. So if I have to reap the benefits of these digital initiatives, I have to address the problem of digital divide.
इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? तो आपको ये इनिशिएटिव्स पता थे क्योंकि आप प्रीलिम्स में पढ़कर गए थे ये इनिशिएटिव्स। अब बस अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास ब्रॉड सब हेडिंग्स होनी चाहिए जिससे कि आप अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स कर सको। तो हेल्थ और एजुकेशन में हमेशा याद रखना अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस एंड क्वालिटी। अब इनमें से आप कोई भी पॉइंट्स उठा के सब हेडिंग बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एग्जांपल्स यू हैव। इज दिस वेरी क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, सो दीज आर मतलब मोस्टली वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, एक आध होगा जो रह गया होगा, तो अदरवाइज वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस which were asked in past 3 years. You need to tell me, based on the discussion that we have, did you get an idea that how the topics have to be prepared? Are you getting an idea how answer writing has to be done? And I know that since you've not made the notes, this PPT would be made available to you. So you don't need to worry about this. This PPT would be uploaded on the platform here in the description box also, and it would also be available on my Telegram channel. So wherever you want to refer, you can refer this PPT. Keep it with you. You can use the content for preparing the fodder of your other answers also. Totally depends upon you. What needs to be written in introduction and conclusion, I have already discussed in my ethics and social justice ka open session. So that aspect I'm not repeating in today's session. Is this very clear? ठीक है, so on this note I conclude the session. I hope you've got some understanding of this topic.